सर करो आप, है ना? अभी देखो बच्चे ज्वाइन हुए कि नहीं, तब उसके बाद स्टार्ट करना, यहाँ पे पता चल जाएगा। So, good morning children. Please refer page 16 of your book Moments. Moments, page 16 you refer. This is our third and concluding model of the story, Iswaran the Storyteller. This is the third and concluding module. So, as I have told you children, that Iswaran was a very good storyteller. His stories were all horror stories, and he also added an element of suspense and surprise at the end of each story. That's why the stories were lively and interesting. So last module, I explained the elephant episode. Okay, so how an elephant became wild and Iswaran controlled him. So the reason he explained that it is due to a Japanese martial art. Martial art means the art by hand. Okay, then this is another incident. You know, he prepared some delicacies for Mahendra, and he told him that he is going to feed the ancestors. So as it is the religious practice to feed the ancestors, for them he is doing. Mahendra was full of horror, but he did not reveal it. Next day, what happened you will see. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night.
He went on means continued. Who continued? Iswaran. Iswaran continued to narrate. Narrate means to explain, to go on explaining, to go on recounting. How he sometimes saw ghosts at night. I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. So he told that I am not afraid of ghosts. So generally I am not afraid of ghosts. But what happens in the middle of the night? There is a woman. A woman is coming and she is holding a tortoise in her arms. So she carries a tortoise in her hand and moves. So the hair was matted. Matted means unruly, disabled hair. Hair is not cropped properly. Hair is not combed. So the woman has been described like that. It is an ugly creature with matted hair and shriveled face, like a skeleton holding a tortoise in his arms. So he wanted to add the frightening element by describing the woman. The woman was almost a skeleton and holding a tortoise in her hand. Her hair was totally unruly. Unruly hair, or you may tell, matted hair and tangled hair. So she is making him afraid. Him means whom? Iswaran. So Iswaran was afraid, as he told. Why? By the appearance of the woman at midnight. What is his purpose? The purpose is to create some fear in the mind of man. So it describes him like that. मेरा तो 30 सेकंड में मुझे भी रखना है प्लीज अरे वो भी टॉप पर बात की वो एक्चुअली वो मैडम इधर से उनको okay. So Mohinder shivered at the description and interrupted her rather sharply. Interrupted in the middle interval. So in the middle she intervened. He intervened. Who? Mohinder. What did he say? That it is all your imagination. He told that Iswaran, you are mad. Crazy means mad. Why he was mad? Because you are all describing unnatural things. So, impossible things you are describing. So, it is better to examine your health. Mohinder shivered at the description and interrupted rather sharply. You are crazy, Iswaran. You are mad. There are no such things as ghost or spirit. He did not believe in ghost and spirit. So he told that you are imagining things. Get your health checked. Okay? It is all figment of your imagination. Figment means it is all your part of your imagination. What is the part of the imagination? The ghost story which you are recounting to me. Because in my belief, there is nothing called ghost or spirit. So what did he suggest? He suggested, get your digestive system examined. Perhaps your system is not working well. That's why you are imagining all these crazy, impossible things. And maybe your head as well. So you may be suffering from some hallucination. Means you are imagining too much. You may be reading horror stories. You are imagining. So get your head and stomach checked. So what are the results told by him? Two results. One is get your digestive system checked. Number one. Number two, get your head checked because you are imagining too much. So according to Mohinder, these ghosts do not exist at all. So whatever you are telling me, that is all part of your imagination. So this is figment of your imagination. It is part of your imagination.
You are talking nonsense. So Mahendra thought he should not allow Ishwaran every day to disturb him and to put confusion in his mind. So he told, whatever you are telling is crazy and unnatural things, don't tell me, and get your health examined. Examine your head, examine your digestive system, so that something is wrong there. That's why you are imagining things. He left the room and retired for the night. Who? Ishwaran. Ishwaran was told to leave the room and go. So he left the room and retired for the night, expecting Ishwaran to solve a couple of days. So Mahendra went. He thought that Ishwaran will not come. To solve means to avoid. So he thought that he will avoid. Okay. To solve means to avoid with a negative feeling. To shy away. To shy away. To avoid with a negative feeling. Why? Because he has told that your stories are nonsense. So Mahendra expected that this fellow will avoid me because I have his sentiment. He left the room and retired for the night, expecting Ishwaran to solve for a couple of days. But the next morning you are surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. Generally, what happens when somebody misbehaves with us or insults us, we avoid the person. But he was not that sort. How? Because the next day it was found that he was as cheerful as talkative he was. अरे वो तो मैं तो बोला वो तो इधर वो अरे यार आपको इतने सेकंड में काम नहीं दिया आपको ओके एजेंट ने भेजा है वो बड़ा मैडम को बोलो मुझे कुछ बोलना मैं बोला उसने मैं बोला मेरा उधर क्लासेस सेकंड में क्लास में तो लिखते भेजा ना From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain uneasy. Though he avoided the topic, there was some fear in his mind. Every night he peered into the darkness. So, I am rubbing the board. Write the difficult words and their meanings. We will proceed next. Actually, what happened? Ishwaran created the ground so that Mahendra will be afraid. How? The previous day he served him delicious dish and he told this dish is made from the ancestors, those who are dead long back. So he told it is part of our ritual to offer food to the ancestors. He is finding many bones and skulls in this place. Next day he came and told about the incident of a night. What did he describe? He described at night there is a skeleton type of woman, a woman with a shriveled face like skeleton and also not cropped up hair, is wandering about carrying a fruitus in the arm. Okay. Then what happened? Mahendra told, you are talking all nonsense because the thing like ghost or spirit does not exist. So he told, you get your head examined. You examine your digestive system and also examine your head. You are suffering from hallucination. Hallucination means you are imagining the things.
So next day he expected Mahendra to avoid him because he has told that his stories are nonsense. From that, so he was as cheerful as talkative ever. So his words had no effect on Mahendra. He was as cheerful as ever. From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed. But a certain element of fear entered into Mahendra's heart from that day. Okay. So he was looking through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. Vicinity is campus. So he was afraid because some element of fear also entered into his mind because regularly Ishwaran was putting on all these impossible horror, supernatural stories in his mind that in some corner of his mind there was a fear. So he was looking through the window at the dark. So he was observing whether there is any movement of it or any shapes or objects are there. Trying to make sure, but he could see only a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away. So there was nothing except the lights of the factory miles away. They were all twinkling. Okay. He had always liked to admire the Milky White's landscape on full moon nights, but after hearing Ishwaran's tale of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. So he was watching the white sky and enjoying its beauty earlier. Now what happened? Even in moonlit night, he was afraid to look out because of the element of fear. He was suspecting there may be some supernatural object, there may be some ghost, some haunted ghost which will harm me. This fear was in his mind. That's why he was afraid. One night, Mahendra was woken up from the sleep by a low moon close to his window. So there was some moaning noise in his window, near his window. So he thought at first it may be his imagination. By hearing the ghost stories always, because every day he was listening some story or other, he may be imagining. One night Mahendra was woken up from his sleep by a low moon close to the window. At first he put it down to a cat traveling around for a match. So what did he think? He thought maybe a cat searching for a mice. Prowling means moving. You know, cats prowl in search of food. That is called prowling. Prowling of the enemy. But if the sound was too guttural for a cat, guttural means so from throat. So coming from throat is called guttural. Okay. So from here throat the noise is coming. He thought like this. Okay. And finally concluded that he must have seen some. So he could not resist the temptation anymore. Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. So he could not stop himself. Resist means to take a stop. So what was the temptation? Temptation is the willingness. The willingness. So at first he wanted to avoid the noise. So then he was tempted to see what is going on outside. That's why what he did, he just got down from the bed, leveled himself with the bed and wanted to see outside what's going on.
He could not resist the temptation anymore. Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. There, not too far away, was a dark, cloudy form clutching a bundle. So it was a dark object clutching, holding tightly. So he saw a female figure, or at first it was not looking like a female figure, it was a dark object holding something in the hand. Something is holding tightly. Mahendra broke into a cold sweat. He was so upset that sweat appeared in his body, that was all cold sweat, and fell back on the pillow. Panting means breathing. So he became afraid too much. So what did he do? He returned to the bed. Totally he was afraid. There was a cold sweat running through his body. He began to. Mahendra broke into a cold sweat and fell back on the pillow, panting. As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself. To reason means to rationalize, to bring reason into his mind, to understand the situation. So at first he was shocked and he was afraid. He was so afraid that a cold sweat ran through his body, and also he panted hard, that breathing hard. But after some time, he put his mind at calm and finally concluded it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious has played on him or on himself. So he reasoned out that it is some sort of auto-suggestion. That when we are conscious, we understand and feel everything. When we are unconscious, we do not feel anything. But when we are subconscious, partly conscious, partly unconscious, so we may see other objects. So he thought that in my subconscious mind, somewhere, the idea of a ghost moving in the night is there. That's why I am imagining the things. By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. It had been to be wiped away. It was already erased. Okay. So he got up, became fresh after a clean bath. He thought he had forgotten the horrible story or horrible incident of the previous night. Okay. He had a bath and come out to have his breakfast. The horror of the previous night had faded from his memory. Iswaran greeted him at the door with his lunch bucket and his bag. Iswaran, as usual, was ready, greeted him, wished him, and made a greeting to him and his bag. Just as Mahendra was stepping out, Iswaran grinned and said, "Grin means laugh." Okay. What did he say? Sir, remember the other day when I was telling you about the female goat with a fortress in its arms, you were so angry. So he told, sir, when I told you about the ghost story, you just laughed at me and thought that I am imagining things. Now you see what happened. Now, same ghost has come. She has come and you have seen her. Sir, remember the other day. So he told when I the other day, the previous day when I was telling you about the ghost story, you told it is all my imagination. There is nothing called ghost. And you advised me to get my digestive system and head, to get my head and stomach checked out by a qualified doctor. Now I am telling you the truth. You also saw it previous night.
Well, you saw her herself last night. I came running, hearing the sound of moaning that was coming from the room. So there was a low exit crying. A feminine voice was coming. So I ran towards the room. So it did not complete. A chill went down Mahendra's spine. Chill means a cold due to fear. Due to fear, there was a sensation of chillness in his spine, in his backbone. He did not wait for Ishwaran to complete his sentence. He hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the 100 place the very next. Determined. So he was determined that I will leave this haunted place. Haunted means which is frequently visited by ghosts. Okay. So this story is written by R.K. Lakshman. You have any doubt, you can quote from the text. Also, you read it. So page number 16 and 17. That is the module 3. Concluding part of our lesson. Now I will read it and write the main gist of the lesson, point by point. So what are the highlights of the module? I will explain you. Point wise I will write. Please note down in your notebook. Ishwaran told Mahendra about So point 1, Ishwar told Mahendra about the appearance of a female ghost carrying a focus in an arm that happens every day night. He saw. Second one, so Mahendra did not trust. He told Mahendra did not trust. He told it is figment of imagination. Okay. So what did he say? Mahendra told you check your digestive system. You check your digestive system. You also check your head. Why? Because you are imagining too much. It may be pure hallucination, or it may be some sort of problem in
your digestive system. That's why you are recounting all these horror stories to me. Third point, though it told like this, an element of fear entered into his heart. How could you say like this? Because at night he used to look out of the window and trying to find out some moving objects and looking into the darkness. If somebody was creeping into the room, this sort of feeling came to his mind because of the effect of Isuran's story. Third point. At night, so fourth point, at night he had a working noise. Who? Mahendra. So Mahendra at night had a working noise. Initially, he ignored it, thinking that it is a cat prowling for mice. So there was a moaning noise, but gradually what happened? The moaning noise became heard and guttural. Guttural means as if it is coming from the throat. So initially discarded the noise, avoided the noise. Why? He thought it is nothing but a cat searching for mice, searching for the food. So he ignored it. But gradually what happened? The noise became more guttural and more harsh. That's why he wanted to inquire. Note down number 4. Okay. Fourth point. Initially, he discarded the noise. Why? Because he thought it is a cat moving in search of food. But gradually, what happened? It became more harsh and guttural. Guttural means as if it is coming from the throat. Okay. Fifth point.
he looked out. Who? Mahendra. Mahendra looked out and what did he see? He saw a dark object, a dark female figure holding something in a bundle. So as I told you, Ishwaran has told that he saw a female figure carrying a fetus. So same thing Mahendra saw when he looked out. So he got frightened, mortal. He was very much frightened because he himself saw in his eyes. Okay, so he was totally frightened because whatever Ishwaran has described the previous night, same appearance he saw. Seventh point. Melvin Dolo. Hello. Hello. Is it okay now, children? Is it okay? Written no? So I am telling the 6 point again, we got frightened. So next morning, he took a bath and had forgotten the horrible memory of last night. Okay. Next morning when he took a bath, he had forgotten the horrible memory of last night.
So, as usual, Iswaran was ready in the morning with his lunch box. Don't depend on the blackboard. I am again narrating. Please listen me. Iswaran was ready in the morning with his lunch box. So Iswaran told Mahendra that initially when I told you about the ghost, you told that it is figment of imagination. You told to get my head and stomach examined. So did you imagine yesterday night? So I heard noise is coming from your room. So when I told you the story, you told I am imagining things, but now you have seen for yourself about the ghost. He told Mahendra that some same horror he told, and he told that the noise was coming from his room. His means whose? From the room of Mahendra. So Mahendra had to no option. He went to the office and was determined to leave the place. He was determined that I will resign my job and go. So Mahendra was resolved. He determined that I will leave this place because this is a haunted place and there are ghosts and supernatural elements. That's why I will leave the place. Okay, children. Now you read it silently, page number 16 and 17. I will write some questions for you in the worksheet. Please note down. So, Mahendra was not a superstitious person. He was very much rational. He was an engineer by profession and he was very practical. But by telling these stories every day, Iswaran made him weak. So that at last what happened? He was determined to leave the job and go because he could not sustain the tension. Okay? So if one thing is told deliberately always in your mind again and again, this will have an adverse effect. So always try to listen the positive and optimistic things. So if a person fills your mind every day with horror, with supernatural stories, you will also trust. You will also believe that there is something called ghosts or supernatural elements in this world. Then please open page number 18. Question answers are there. You have to write. Besides that, I will also give a worksheet to you on this particular module 3 by 3.
So I have taken these lines. I am not really frightened. By these things I am a brave fellow. So question number one, who told this to whom? Question number two. Question number two. Question number one. I am not easily dash hello. These lines are taken from the story from page number 16. Page number 16, paragraph you see children. I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. So who told this to whom? Question number one. Question number two. How he describes the woman ghost or the female ghost. What was his purpose? What was his purpose? Why did he describe such a horrible story to Mahendra? What was his purpose? It will be your own answer because in the textbook it is not mentioned for what purpose he did like this, but it is clear he was telling supernatural stories every day. So you have to find out. You have to use your imagination and write this. Number 3. So number 2 question, how Mahendra tried to discard Iswaran's stories. So as I told you, he told that you may be having some digestive disorders or you are imagining too much. That's why he advised him to get his stomach and head checked. So that was the suggestion given by Mahendra. In this way, he tried to discard Iswaran's stories. Number 3 question. Imagine what would have taken place actually. So, what is your imagination, children? As I imagine, Iswaran himself would have clad himself with a cloth or something. He would have carried something and appeared in the dark in order to frighten Mahendra. So, Iswaran himself might have posed as the ghost. His purpose was to make Mahendra frightened. So, for that purpose, he might have appeared as a ghost at night. So, that was the
That was the idea, our idea. It is not given in the text, but we clearly assume from his mentality that his purpose was to make him frightened. That's why he might have done like this. Who? Isuran. Isuran the cook. So as a whole, this chapter is over. Let me tell the gist of the chapter again. 5 minutes are left. So as I know, Mahendra was a construction supervisor by profession. He used to move from place to place. He had a cook called Isuran. Isuran was a very helpful cook. He was his friend. At the same time, he was a resourceful person and also a very good storyteller. So every day he used to narrate different supernatural stories to Mahendra. So in the course of his stories, he will tell certain impossible things also, but he told in such a manner that you cannot just ignore him. You have to listen and trust him. His stories were such. So he told him about one elephant incident when an elephant became mad, how everybody ran with fear, but he himself with a stick could paralyze the elephant. That is the incident. Second one, he told that this place is haunted, and he always added some surprise and some suspense at the end of each story, so that his stories had a good impact on the listener. Mahendra was listening his stories, and he was also a very good replacement for a TV or something. So days passed on. One day he told that he is preparing some delicious food for the spirit of the ancestors, and he also told it is a graveyard. Okay, so Mahendra wanted to discard his imagination. He told that he is imagining things because when he narrated about the appearance of a female ghost carrying a photos in her arm, so Mahendra wanted to discard, but Isuran told that it is happening every night. Though Mahendra discarded, there is an element of fear in his mind. So he was peeping out of the window into the dark at night. So because he was afraid some object may appear, it happened that one night he looked out and was horrified. Why? Because he saw a dark object looking like the figure of a female clutching something in the hand tightly. He was totally frightened and somehow reasoned himself. In the morning, the cook met him and told that, "Sir, you were telling my stories were full of imagination, and you also saw with your own eyes last night." So Mahendra was so frightened that he went to the office, and that day he was determined that I will leave this haunted place. I will resign my job. So that is the conclusion of the story. Okay, children. Okay. Please post your name to my WhatsApp number so that I will give you attendance. Any doubt is there, you can text also. Please note down.
ये हमें टेंशन में वो चौक पर डिब्बा सा रखा है योग करो। हाँ please give your comment in the comment box that we are starting 9th class maths. For maths you write for maths yes sir, for maths yes sir. Give your comment. Give your comment 9th standard student, 9th NB. Yes sir, yes sir. Give your comment on the comment box. Yes sir, for maths. For maths class, and give your attendance also on the WhatsApp also. For maths only. Right subject maths sir, present sir. In WhatsApp, you please give your attendance. But in the comment box, how many students says yes? I am counting. Please give comment that we have joined for mathematics. And this class will go up to 2 hours. 1 hour for maths and 1 hour for physics. On the same link. अभी 10 बजे नहीं है, 10 बजे स्टार्ट करूंगा मैं. But I am counting. How many students have joined? गिनगांव कितने बच्चे? I told how many students say yes for maths. ये comment box है ना सर ये? अच्छा कौन सी क्लास है? 9th. Join maths उसमें count करो. And once you will get the sufficient number. हाँ, I will start. 10 बजे start करना सर. 2 घंटे रहना है ना, मुझे देखना नहीं. Ravinder Kumar, why you are writing again and again? I have seen your name. Other students also write. At 10 o'clock, I will start my class. 2-3 minutes left. Because I have to hear up to 2 hours.
Today I will do lines and angles. Very big chapter. Lines and angles. In 9th standard there are so many theorems. And students, you are requested worksheet for 9th standard. Worksheet for 9th standard. It is given on the e-contents. चैप्टर वाइज वर्कशीट दिया हुआ है e-contents में. आपको वो सारी वर्कशीट करके और इन डिब्बों में डालनी जो हमने स्कूल नंबर 2 में रखे हुए हैं. वर्कशीट जो सोसाइटी की तरफ से e-contents आए हैं उसमें वर्कशीट है. वो वर्कशीट डाउनलोड करिए और उसको करिए और फिर यहाँ डालिए. What I am saying, वर्कशीट आर गिवन इन द e-contents. वर्कशीट दी हुई है सोसाइटी से, हमें अलग से वर्कशीट देने की जरूरत नहीं है. हर चैप्टर वाइज वर्कशीट आपको है, आपके पास है, वो e-contents में मिलेगा आपको. सारे चैप्टर्स की वर्कशीट करके, जो चैप्टर हो चुके हैं उनकी वर्कशीट करके और फिर यहाँ पर डाल के जाइए. What I am saying, listen me carefully. वर्कशीट जितनी भी है, जिस चैप्टर की वर्कशीट e-contents में आई है जो सोसाइटी की तरफ से, AES वेबसाइट पे भी आपको मिलेगा, उन सब की वर्कशीट डालिए, उनको करिए और फिर स्कूल के बुक्स में डालिए. व्हाट आई एम सेइंग, लिसन इट केयरफुली. वर्कशीट डालिए स्कूल के बॉक्स में जो e-contents में दी हुई है आपको. अगर e-contents आपसे मिस हो गए हो तो AES वेबसाइट पे भी e-contents दिए हुए हैं हर चैप्टर के. तो वो जो चैप्टर हो चुके हैं, दैट यू प्लीज डू इन योर होम दैट वर्कशीट इन ए पेपर और उसको यहाँ बॉक्स पे डालिए. यू आर टेकिंग माई पॉइंट. कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के दिखाइए यस सर. What I am saying, please in comment box inform me. Yes sir. जो वर्कशीट आपकी चैप्टर वाइज दी हुई है, उन वर्कशीट को एक पेपर में करके, रूल्ड पेपर में करके और फिर यहाँ बॉक्स में डालना है, जिससे मैं आपको चेक कर सकूं वर्कशीट को. हमें ये पता लगेगा दैट यू आर डूइंग और नॉट. Now I am going to start the chapter lines and angles. Please give your attendance on the WhatsApp also. Please give your attendance on WhatsApp also.
Before starting lines and angles, all of you, I will discuss the definitions of basic terms, but you all of you write all definitions in your copy, homework copy. The first one is, I am writing the first line segment. Second is ray. Third is angle. Fourth is collinear points. Fifth is, I will discuss the definitions of all these. मैं वो बेसिक टर्म्स लिख रहा हूँ जिनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और ये डेफिनेशन यू हैव टू राइट इन योर होमवर्क कॉपी. These are basic 60s acute angle, 7th right angle, 8th obtuse angle, 9th reflex angle, 10 zero angle, 'in सब चीजों की definition, 10 definition you have to write in a book, but one by one I will tell the definition. आपको मेरी वॉइस आ रही है ना क्लियर? वॉइस इज कमिंग और नॉट? कमेंट बॉक्स में बोलिए. माय वॉइस इज कमिंग और नॉट? कमेंट बॉक्स में बोलिए. मैं इन सब की डेफिनेशन आपको बताऊंगा, आपको लिखनी है अपनी कॉपी में. देन यू हैव टू राइट. ये 10 चीजें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैथमेटिक्स के जो स्टार्टिंग में. माय वॉइस इज कमिंग और नॉट? प्लीज टेल मी. आप हर एक की डेफिनेशन नोट करिए. हाँ, कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं और भी दीजिए बच्चे जिनको वॉइस आ रही है सबको, जिससे मैं इनकी डेफिनेशन आपको बोल के लिखवा सकूं. 2 बार मैं बोलूंगा, देन यू हैव टू राइट. यस, बोर्ड पे एकदम क्लियर दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? किस वजह से? ये लाइट की वजह से मैं देखता हूं. कैन यू सी द बोर्ड नाउ? गिव मी द कॉमेंट. अभी बोर्ड नजर आ रहा है आपको? बोर्ड नजर आ रहा है? प्लीज गिव द कमेंट. बोर्ड नजर आ रहा है अभी? ओके. नाउ
Board is clear? Now board is clear now? See, no sir लिखने से कोई फायदा नहीं है. Now you see. पहले जैसा तो अभी भी है, कर दिया ना मैंने पहले जैसा. Okay, now don't give any comments. First basic point is line segment. Don't give the comment now. First is the line segment. What is the line segment? Fourth point, collinear points है, collinear points. ये जो वर्ड जो बोर्ड ब्लर आ रहा है, ये आ रहा है, ये आपकी नेट की प्रॉब्लम है. हाँ तो सब चीजें दिखाई दे रहा है, एकदम क्लियर है. Okay, now you start. Line segment. Okay, my voice is coming. Listen it carefully. मैं पढ़ दूंगा उसको, आप लिख तो सकते हैं ना. What is line segment? लिखिए इसको. Line segment में it is the part of a line. It is the part of a line having two endpoints it is the part of a line having two endpoints. It is the part of a line having two endpoints. आप लाइन सेगमेंट पढ़ते हुए लाइन में ए और बी दो एंडपॉइंट होते हैं ना, ए बी, वो होती है लाइन सेगमेंट. समझ में आया? व्हाट इज लाइन सेगमेंट? इट इज द पार्ट ऑफ द लाइन हैविंग टू एंडपॉइंट्स. रे, व्हाट इज रे? रे इज व्हाट? It is part of a line. It is part of a line having one endpoint. Two endpoint नहीं, one endpoint. Part of a line having one endpoint. जैसे ये S. यहाँ B point लगा दो तो कहेंगे A B is a ray. A जो है इसका endpoint है, A B उधर जा रहा है. A B is a ray. It is a part of a line having one endpoint. You are taking point by one endpoint. Angle. Angle क्या होता है? Combination of two rays. Combination of two rays having same endpoints. दो रे कंबाइन कर दी जाए और उनका एंडपॉइंट एक हो तो एंगल फॉर्मेशन करता है. कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज हैविंग सेम एंडपॉइंट. Having same endpoints. Okay. दो रे जिनका सेम endpoint है, that is called angle. That is called angle.
ये थर्ड है। अच्छा, आप ऐसे ही किसी चीज को डिफाइन कर सकते हैं। मैं एक चीज पूछता हूँ, व्हाट इज ए पॉइंट? व्हाट इज ए पॉइंट? A figure which does not have any length, breadth and height is called point. इसमें नहीं लिखा हुआ, ये मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ। What is a line? What is a line? Line segment का आपने बोल दिया, part of a line. तो line क्या होती है? A group of points which can extend in both direction. दोनों डायरेक्शन में इंक्रीज की जा सकती है। ग्रुप ऑफ पॉइंट्स होता है जो दो डायरेक्शन में इंक्रीज किया जा सके इंफिनिटी तक, दैट इज कॉल्ड लाइन। नाउ आई एम कमिंग कोलिनियर पॉइंट्स। व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स? ये पहली बार आपने सुना होगा। इफ यू आर रेड इन 8th स्टैंडर्ड, आई डोंट नो व्हाई, but you can write 3 or more points lies in a line are called collinear points. 3 या 3 से ज्यादा। Why are we taking 3? Because 2 point is always in the line. 2 points के साथ एक लाइन भी खींच सकते हैं। But 3 or more than 3 lies in a line, एक ही लाइन पर लाई करे, एक ही लाइन पर लाई करे, एक ही स्ट्रेट लाइन पर हो। These points are collinear points. What are these called? Collinear points. All of you write in your copy. जो definition मैं बोल रहा हूँ उनको सब आप कॉपी में लिखना है। कभी भी आप स्कूल आएंगे तो मैं ये सब चीजें चेक करूंगा। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, वेरी सिंपल। 3 or more points which does not lie in a line, जो लाइन पर लाई नहीं करते, do not lie in a line, are called non-collinear points. Non-collinear points. कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं बेटा? तो एक ही लाइन पे लाइन करते। आप बड़ी लाइन लीजिए, उस पर सारे पॉइंट लीजिए, तो जितने भी सारे पॉइंट होंगे दीज आर ऑल कोलिनियर पॉइंट्स। एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं बेटा? तो लाइन पे लाइन नहीं करते, दे डू नॉट लाई इन ए लाइन, जो सीधे नहीं होते, वो पॉइंट्स होते हैं नॉन कोलिनियर। आप एग्जांपल दे सकते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के? वेरी सिंपल। आपने ट्रायंगल सुना है? ट्रायंगल के जो वर्टेक्स होते हैं, दीज आर पॉइंट्स, दीज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एक ट्रायंगल बनाते हैं ना सर, तो वो क्या होता है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, दीज आर नॉन कोलिनियर। ये जो डेफिनेशंस हैं सारे एंगल की जो डेफिनेशंस हैं, ये आप 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये मैं आपको बता देता हूं एक एक लाइन में। वैसे ऑल ऑफ यू नो, आई थिंक एक्यूट एंगल्स, जो प्राइमरी सेक्शन से आप आ रहे हो, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज राइट एंगल, ये आप सब लोगों को मालूम है। बट यू हैव टू राइट इन योर बुक, बिकॉज इसमें 9th स्टैंडर्ड में इसका यूज होगा। व्हाट इज एक्यूट एंगल? An angle which lies between 0 and 90। 0 और 90 के बीच में जितना भी मेजरमेंट है, देखो 0 एक्यूट एंगल नहीं होता या 90 भी एक्यूट एंगल नहीं होता। 0 और 90 के बीच में जितने भी एंगल्स हैं, these are called acute angles, whose measure lies between 0 and 90. Right angle is what? Whose measure is 90 degree. An angle whose measure is 90 degree is called right angle. Obtuse angle,
whose measure lies between 90 and 180. 90 and 180. वो that is called obtuse angle. Reflex angle, whose measure lies between 180 and 360 are called reflex angle. What is this? Reflex angle. कहाँ से कहाँ तक? 180 से 360. वो सारे के सारे एंगल जितने इसके बीच में लाई करेंगे वो सारे के सारे रिफ्लेक्स होंगे. अब आप आपने जैसे राइट एंगल का whose measure is 90, जीरो एंगल whose measure is 0 is called zero angle. Straight angle whose measure is 180 is a straight angle. ये भी आप नोट कर लो. Straight angle, straight angle. और एक और नोट करो, कंप्लीट एंगल. Straight angle is what? Whose measure is 180 is called straight angle. और कंप्लीट एंगल whose measure is 360. देखो जो मेजर पे डिपेंड करता है कौन कौन से एंगल होते हैं. वन इज 0 डिग्री, अनदर इज 90 डिग्री, अनदर इज 180 डिग्री, अनदर इज 360. जीरो वाला जीरो एंगल, 90 वाला राइट एंगल, 180 वाला स्ट्रेट एंगल, 360 वाला कंप्लीट एंगल. ये सारी की सारी डेफिनेशन बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर यू प्लीज राइट. एक पेज पे सारी डेफिनेशन लिखी होनी चाहिए. बड़े सुंदर हो, बड़े अच्छी तरीके से लिखा. आप जैसे आप एक्यूट एंगल की कोई डेफिनेशन दे रहे हो तो उसके आगे एक सिंपल सा एक्यूट एंगल बना दीजिए. आप राइट एंगल का एग्जांपल देते हो, राइट एंगल बनेगा. राइट एंगल कैसे बनेगा? आप स्ट्रेट एंगल की डेफिनेशन दे रहे हो तो स्ट्रेट एंगल बनेगी. उसकी फिगर भी होनी चाहिए. मालूम है मैथमेटिक्स के अंदर फिगर बहुत वैल्यू लगती है. अभी तो 9th स्टैंडर्ड में आपका पहला चैप्टर आया है लाइन जनरेटर, तो असली मतलब कि अब ये ज्योमेट्रिकल जो चैप्टर है अब थ्योरम ही थ्योरम आपको मिलेगी. यू हैव टू प्रूव द थ्योरम. अब मैथमेटिक्स जो हायर मैथमेटिक्स है 9th में क्या बोलते हैं, 9th से हायर मैथ स्टार्ट होता है. आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप उसको देख पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे. कोई भी चीज करा रहे उसकी प्रैक्टिस जरूरी है. अंडरस्टैंड? कंप्लीट एंगल आप 0 डिग्री एंगल नहीं फंस सकते. जैसे ये रे ग्रीन तो नहीं इसके ऊपर ये 0 डिग्री है. और एक कंप्लीट एंगल कैसे दिखाओगे? इसी एंगल को ऐसे करना. ये कंप्लीट है. इसलिए कंप्लीट एंगल 360 का एंगल. और 0 में ये गोला सा नहीं बना. 0 डिग्री एंगल, एक कंप्लीट एंगल. रिफ्लेक्स एंगल भी आप दिखा सकते हो. कैसे? ये और उसको दिखाना पड़ेगा एंगल. दिस इज ए रिफ्लेक्स. तो जिसकी आप डेफिनेशन लिख रहे हो उसकी डेफिनेशन की फिगर भी वहां पे दिख रही है. कॉपी देखने में अच्छी लगे. टेकिंग माय पॉइंट. कॉपी देखने में अच्छी लगे कि सारी डेफिनेशन देखो कितने अच्छे वीडियो, सारी डेफिनेशन कितने अच्छे लगे. टेकिंग माय पॉइंट ना. ऐसे आज हम सारी डेफिनेशन को दिखा सकते. वेरी सिंपल. और ये सब चीजें आपने पहले भी पढ़ा हुआ है. मैं ये नहीं कहता कि ये अभी से सब चीजें नहीं है, बट मैथमेटिक्स है. मैथमेटिक्स क्या चाहता है? जितना आप लिखोगे ना, जितना आप कॉपी में भरोगे, वो क्वेश्चन जितने आप करोगे कॉपी में, उतना ही मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, मैथ्स अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है. तो मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स अगर आपको करना है तो आपको जितना आप लिख सकते हो, हर चीज को लिख के देखो, हर चीज को करके देखो. ऐसे हिस्ट्री की तरह मत पढ़ो, इंग्लिश की तरह ऐसे नहीं पढ़ो. आपको लिखना है, कॉपी पेन उठाना है. हम भी पढ़ा रहे हैं तो बोर्ड का यूज कर रहे हैं, लिख रहे हैं. इसलिए मैथमेटिक्स को लिखिए, जितना आप लिख सकते हैं तभी मैथ्स अच्छा होगा, अदरवाइज नहीं.
Please see, please write these definitions. ये सारी की सारी डेफिनेशन, अभी मैं आगे की डेफिनेशन, अभी तो मैंने एक ही चीज बताया, अब मैं पेयर ऑफ थिंग्स बताऊंगा, उनकी भी डेफिनेशन आपको कराऊंगा, जिससे आगे बढ़ूंगा, फिर मैं थ्योरम पे आऊंगा, थ्योरम कराऊंगा, मैं फर्स्ट एक्सरसाइज तक आ जाऊंगा, है ना? तो आप इस चीज को देखिए, ये सारी की सारी डेफिनेशन यू हैव टू राइट इन योर कॉपी इन अ प्रॉपर वे, बहुत अच्छी तरीके से लिखनी है सारी। Yes. All of you written this one? सब लोगों ने लिख लिया, कंप्लीट कर लिया, तो कमेंट बॉक्स से बोला करो ना कंप्लीट सर, तो मैं आगे बढ़ूं उससे। Who is this Mazin guy? Who is this? Please give the name of this student, Mazin. Mazin, please name. Other student, please tell the name. Mazin guy, who is this? Who is this Mazin guy? जो लड़के ने गलत लैंग्वेज लिखा वो कौन है? प्लीज गिव मी इन कमेंट बॉक्स। प्लीज गिव मी इन कमेंट बॉक्स व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट, टेल मी। तो प्लीज फाइंड आउट द नंबर ऑफ दिस गाय ना, ये कौन है? ये जुड़ा हुआ कैसे है यहाँ पे लाइन्स में? Who is this? Who is this boy? Tell the name. Okay. Yes, I am giving some more definitions to you people. One, please note down. Complementary angles. ये pair of angles हैं. Complementary angles. Second is supplementary angle. Next, adjacent angles. Next, linear pair of angles. Next, vertically
vertically opposite angles. I will discuss these all 5 things to you. Very, very, very important. Very, very, very important. Yes, you can write. One by one मैं बताऊंगा जब भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. I will discuss all these things to you people. Please write. Okay, अगर आप इनको लिखना चाहते हो तो पहले आप इनको लिख लीजिए. पहला है complementary angles, second है supplementary angles, third है adjacent angles, fourth है linear pair of angles, और fifth है vertically opposite angles. लिख लो इनको. by one इनकी definitions आपको कॉपी में लिखनी है. Please note down the name of that student who has used a bad language here and tell the name on my personal number. No, एक ही नोटबुक बनाओ ना, उसी में करते रहिए. आप रजिस्टर बनाइए, उसी में करते रहिए. और जो वर्कशीट्स हैं, जो ई कंटेंट्स के द्वारा वर्कशीट है, वो यहाँ पे आप डाल के जाइए. होमवर्क तो जब आप आओगे तब भी चेक कर देंगे हम. Homework तो when you join the school, then also we can check it. But जो वर्कशीट आपको दी गई है ई कंटेंट्स के थ्रू, उन वर्कशीट को करके यहाँ पे पेज में डाल के जाइए. और ये चीजें तो आप करते रहिए. अपनी कॉपी के अंदर एक मोटा वाला रजिस्टर बना लीजिए और इसको करिए. एक ही रजिस्टर बनाइए. होमवर्क और क्लास वर्क सेम है वो. ये तो आप रफ में भी कर सकते हो. जब आपकी क्लास चल रही होती है ना बेटा, व्हेन योर क्लास इज गोइंग ऑन ना, तो सारी की सारी चीजें जल्दी जल्दी रफ वर्क में उतार लो और फिर उसके बाद उसको फेयर कर लो. क्योंकि मैं इसलिए ऐसे कराता हूं कि मैथमेटिक्स के अंदर अगर रिपीटिशन होगा तो और अच्छा होगा. मैथमेटिक्स में अगर रिपीटिशन होगा तो और अच्छा होगा. तो ये जितनी भी क्लासेस चलती रहती है ना, इनको आप रफ में करते रहो. इनको आप रफ में करते रहो जल्दी जल्दी. और फिर लास्ट में जब क्लास खत्म हो जाए, एक दिन का गैप तो होता ही है, मैं आता हूं तो उसमें आप इनको फेयर में अच्छी तरह. और क्या पता मैं ये कॉपी, होमवर्क कॉपी आपसे मंगा लूं कभी. Am I right? भाई कॉपी तो देके जा सकते हैं. अभी मत देके आना. जब सिचुएशन थोड़ी अच्छी हो जाएगी तब हम कोई ना कोई डिसीजन लेंगे तो बताएंगे. ओके बेटा? But tell the name of that student who has used the bad language. Please tell me. Tell the name on my personal number. मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है आपके ग्रुप में, वही मेरा पर्सनल नंबर है. आप उसमें फोन करके भी बोल सकते हो कि सर वो स्टूडेंट है वो. देन आई विल टॉक टू हिज फादर. क्योंकि जब आप बोल रहे हो कि कल की जयंत प्रसाद सर की क्लास में भी वो ऐसे ही बोला है, तो वी हैव टू टेक सम एक्शन ना. उनको बताना तो पड़ेगा ना बेटा. सो टेल द नेम. अगर आप इस कमेंट बॉक्स में नाम लिख सकते हो तो चुपचाप नाम लिख दीजिए. कोई नहीं देख रहा इस कमेंट बॉक्स को. कोई दूसरे स्टूडेंट इस कमेंट बॉक्स को नहीं देखते हैं. किसी को नाम अगर मालूम है उसका तो नाम लिखिए.
जिसने नाम लिखा है उसका नाम नहीं बताया जाएगा। कमेंट बॉक्स सब बच्चे नहीं देखते हैं, केवल मैं देख सकता हूं, और फिर उसके बाद वो खत्म होते रहते हैं। ओके, I will discuss complementary angles. Okay. What are complementary pair of angles? Complementary angles क्या होते हैं? Write the definition. Two angles whose are called complementary pair of angles. Two angles whose sum is 90 degree. दो एंगल अगर उनका सम 90 डिग्री है तो वो जो दो एंगल होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं वो। कैसे? कैन यू गिव द एग्जांपल? वेरी सिंपल, 20 डिग्री 70 डिग्री, am I right? 30 डिग्री 60 डिग्री, दोनों का सम क्या है? 90। अच्छा एक बात बताओ, अगर सपोज वन एंगल इज गिवन, यू कैन फाइंड आउट इट्स कॉम्प्लीमेंट। वेरी सिंपल, 90 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे आई एम टेलिंग वन एंगल 70 डिग्री, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ? ओके, तो कॉम्प्लीमेंट का एंगल की डेफिनेशन क्या रहती है? टू एंगल्स whose sum is 90 degree are called pair of complementary angles. Are called pair of complementary. In the same way, what is supplementary angles? What are supplementary angles? Two angles whose sum is 180 degree. इसका सम कितना होता है? 90 नहीं 180 डिग्री। सम कितना होगा बेटा? सम कितना होगा? 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री में सम कितना होगा? 180 डिग्री। Two angles whose sum is 180 degree are called supplementary angles. And you can find out the supplement of the angle also. बड़ा सिंपल। और आपको पता है इसके डेफिनेशन लिखने के बाद इनकी एक एग्जांपल भी जरूर लिखना। जैसे 90 और 90 दोनों का सम कितना है? 180, तो ये भी एक सप्लीमेंट्री है। ओके, तो मैंने ये भी कहा ना, जब आप कोई भी चीज लिख रहे हो उसकी डेफिनेशन लिख रहे हो, इफ यू आर राइटिंग द डेफिनेशन यू मस्ट गिव द एग्जांपल। वन और टू एग्जांपल जो आप जरूर दीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन से हैं और सप्लीमेंट्री पेयर कौन से हैं। ये कर लिया दोनों, ये दोनों कर लिया। मैं इन दोनों को ऊपर से रब करूंगा क्योंकि एडजस्टमेंट का डेफिनेशन देना है। प्लीज गिव मी द कमेंट दैट वी आर कंप्लीटेड दिस। दोनों हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। आई एम रबिंग दिस कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, सी now I am giving the definition, three definition. First, adjacent angle. Adjacent angle, इसकी definition आराम से लिख दीजिए। Two angles are said to be adjacent if two angles are said to be adjacent if pari condition, first condition. तो एंगल एडजस्टमेंट होनी चाहिए having
कॉमन वर्टेक्स, उन दोनों एंगल के वर्टेक्स कॉमन होने चाहिए, एक ही वर्टेक्स होना चाहिए। पहली कंडीशन, हैविंग कॉमन वर्टेक्स। ओके, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? वन आर्म कॉमन। यू नो, एंगल में दो आर्म होती है, दो रेस होती है, एक आर्म जो है ना कॉमन होनी चाहिए, वो पहले एंगल की भी होनी चाहिए और दूसरे एंगल की भी। ये दूसरी कंडीशन होनी चाहिए। दिस इज द सेकंड कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? वन आर्म कॉमन होनी चाहिए, एक आर्म कॉमन होनी चाहिए। एंड द सेकंड कंडीशन और थर्ड वन, interiors do not overlap, do not overlap। जो एंगल का इंटीरियर पार्ट है ना, वो अलग अलग होने चाहिए, वो एक दूसरे के ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन दो एंगल फुलफिल करते हैं, two angles are said to be adjacent if common vertex, one arm कॉमन होनी चाहिए, एक आर्म कॉमन होनी चाहिए, और इंटीरियर दो के दो इंटीरियर होंगे, डू नॉट ओवरलैप, वो ओवरलैप नहीं करना चाहिए। तो हम कहेंगे कि दोनों एंगल्स क्या है बेटे? एडजेसेंट एंगल्स हैं। दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। वही एंगल एडजेसेंट होंगे जो इन तीन कंडीशंस को फुलफिल करें। फॉर एग्जाम्पल सी, मैं फिगर बना के दिखाता हूं। सी, आई एम मेकिंग ए फिगर। कैसे? सी है, मैंने फिगर बनाई, ये एंगल और ये एंगल, सी दोनों एंगल के कॉमन वर्टेक्स है, वो एक आर्म कॉमन है, वो भी, और दोनों के इंटीरियर क्या है? अलग अलग। कौन कौन से एंगल इस फिगर में? एंगल एओबी एंड एंगल बीओसी। ये दोनों एंगल क्या है बेटे? एडजेसेंट है। इनके इंटीरियर अलग है, इनके इंटीरियर अलग अलग है, दोनों अलग अलग हैं, तो ये दोनों क्या है? एडजेसेंट। प्लीज नोट डाउन दिस, और ये कंप्लीट हो जाए तो मेरे को कमेंट में बोलना यस कंप्लीट। और एक एग्जांपल और देना, यू ड्रॉ ए लाइन और इसमें ये करिए, ये भी लाइन, ये ओ पॉइंट है, ओसी स्टैंड होनी, ये एंगल बीओसी एंड एंगल एओसी, ये भी एक एडजेसेंट है। ये दोनों एंगल भी क्या है? एडजेसेंट। ये दो एग्जांपल देना, इसमें कौन कौन से एंगल लिखोगे? एंगल एओसी एंड एंगल बीओसी। प्लीज कंप्लीट और मेरे को बताओ सर भी कंप्लीट। कंप्लीट करके लिखिए एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन, क्योंकि हर जगह पे एडजेसेंट एंगल आपको पता लगाने पड़ेंगे कि एडजेसेंट एंगल है या नहीं। प्लीज नोट डाउन दिस, अच्छी तरह नोट डाउन करिए। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है, जब आप डेफिनेशन लिखते हैं तो उसके नीचे एंगल्स जरूर लिखिए। एडजेसेंट एंगल की पूरी डेफिनेशन, इसके नीचे एग्जाम्पल। मैंने जैसे आपको किया क्या है, जैसे मैं यहाँ बोर्ड पे कर रहा हूँ, अगर पूरा बोर्ड अगर काम पे आता तो बहुत अच्छी तरह लिख सकते थे, बट अभी भी हमारी लिमिट्स है ना, हम इतने पार्ट में लिख पाते हैं, तो आपको ये करना होगा। प्लीज नोट डाउन दिस। सबका मैसेज यहाँ पे आना चाहिए कंप्लीटेड सर, सबका मैसेज यहाँ पे आना चाहिए कंप्लीटेड।
जब तक सबका मैसेज नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि ये चीज मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह बतानी इन चीजों को। सेकंड वाला है वन आर्म कॉमन। आर्म मतलब एक साइड कॉमन होनी चाहिए। और कोई चीज पूछना चाहता है? हाँ, सेकंड पॉइंट मैं कह रहा हूं ना, सेकंड पॉइंट है वन आर्म, आर्म कॉमन, एक आर्म कॉमन है। बार बार कह रहे हो सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट मैंने 3 बार रिपीट कर दिया ना, वन आर्म कॉमन। ओके, आर्म मींस वो उसकी 2 आर्म होती है ना एंगल की। सबका मैसेज आना चाहिए। Why you are saying every time second point, second point? अरे जब कोई एंगल होता है ना, ये एंगल यू नो, ये एक आर्म होती है और ये एक आर्म होती है। जो रे होती है ना, ये आर्म होती है, these are arms, और ये इसका इंटीरियर होता है, दिस इज इट्स इंटीरियर, ये आर्म है। ओके, मूव। Second, linear pair of angles. इसकी डेफिनेशन लिखिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब देखो मैं क्या लाइन में क्या जोड़ रहा हूं, उस चीज को आप देखिए। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन से होते हैं? टू टेंजेंशियल लिखता हूं, वन टू एडजेसेंट एंगल्स whose sum is 180 are called linear pair of angles. ये डेफिनेशन को अच्छी तरह देखिए। Two adjacent angles whose sum is 180 are called linear pair of angles. लिख लिया सबने? Have you written this? अगर आपको बोर्ड में दिख रहा है, मैं बोल भी रहा हूं बार बार। Two adjacent angles whose sum is 180 are called linear pair of angles. अब आप इसका एग्जांपल कैसे दोगे? सी, ये इसका सबसे बेस्ट है। There is a line, AB is the line, and one ray stands on this OC. ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों लीनियर पेयर है। देखो इनका सम क्या है? 180। सम इज 180 डिग्री।
इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। That is called linear pair of angles. ध्यान रहे बेटा, listen. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के लिए पहली कंडीशन क्या होती है कि दोनों एंगल एडजेसेंट होने चाहिए। एडजेसेंट मतलब उनका वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, एक आर्म जो है कॉमन होना चाहिए और इंटीरियर अलग अलग होना चाहिए, वो कहलाता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और ध्यान रहे, इसी लीनियर पेयर ऑफ एंगल से मैं एक दो एक्सियम लिखूंगा आपको, उसका हम बोलते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। आप नोट डाउन करो, वो हर जगह यूज होंगे आपके। एवरीवेयर आई विल अप्लाई लीनियर पेयर एक्सियम, और मैं उसको एकदम प्रूव करके कहता हूं व्हाई इज ड्यू टू लीनियर पेयर एक्सियम। यू राइट लीनियर पेयर एक्सियम क्या होता है, ये सबने पहले फिगर बता दी। यस, अभी देखिए लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम, ये क्या होता है लीनियर पेयर एक्सियम? देखिए थोड़ा आप ध्यान से देखिए, मैं पूरा का पूरा लीनियर पेयर एक्सियम लिख रहा हूं, पर उसको समझाऊंगा कि लीनियर पेयर एक्सियम। देखिए, if a ray stands on a line, if a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles is 180 degree. Very important. ये एक लीनियर पेयर एक्सियम है, और ये वाइस वर्सा होता है। वाइस वर्सा क्या, इसको सीधा लिखो और उल्टा लिखो, दोनों में ही सही मिलता है। व्हाट आई एम सेइंग, अगर कोई एक रे है, एक रे अगर किसी लाइन पर खड़ी है, मैंने अभी बताया था, तो दो जो एडजेसेंट एंगल बनेंगे ना, उनका सम होगा फ्रॉम 180। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इट इज एक्सियम, ये रूल होता है, इट इज एक्सियम। अगर कोई रे है, उसके ऊपर दूसरी रे खड़ी है, पर एक ही लाइन, तो सीधी लाइन होनी चाहिए जिसके ऊपर एक रे खड़ी है, वो कैसे भी खड़ी हो, यूं हो यूं हो यूं हो, कैसे भी हो, बट दो एडजेसेंट एंगल जो उसमें बनेंगे वो क्या होंगे बेटा, उनका सम कितना होगा, 180 देयर सम मस्ट बी 180। You are taking my point now? One. यस, ये समझ आया ना? अगर कोई रे एक लाइन में खड़ी है, तो आप डायरेक्टली उसको बोल सकते हो कि दो जो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं उनका सम 180 है, ड्यू टू एलपी, लीनियर पेयर एक्सियम। समझ गया ना? अच्छा, इसका अलग क्या होगा, इसी का और हम लीनियर पेयर लिख सकते हैं। लिखिए दूसरा वाला,
if the sum of two adjacent angles if the sum of two adjacent angles is 180 degree, then non-common arm the non-common arms form a line. बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? लिसन, कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे जब एक्सरसाइज करेंगे, हर जगह हम लीनियर पेयर बोल देंगे। क्या है? बोला हमारे पास कोई लाइन है, पहले एग्जाम कहता है कि अगर ये लाइन इस पे खड़ी है ओसी स्टैंड ऑन एबी, तो पहला एग्जाम कहता है कि ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा इस एग्जाम के बाद। एंड द सेकंड एग्जाम व्हाट इट सेज, इफ टू एडजस्टेंट एंगल, दो एडजस्टेंट एंगल है, whose sum is 180, उन दोनों का सम 180 है, तो ये जो नॉन कॉमन आर्म है ना, ओ ए और ओ बी, ये क्या बनाएंगे? लाइन ए बी से लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो नॉन कॉमन, कॉमन तो उसी, जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक लाइन है। नोट डाउन दिस, प्लीज नोट डाउन दिस। This is called linear pair axioms. ये वाइस वर्सा होता है, दोनों जगह में यूज कर सकते हैं। अगर दो एडजस्टेंट एंगल का सम 180 दे रखा तो आप कह सकते हो नीचे वाली लाइन है, और अगर एक लाइन है और एक लाइन उस पर खड़ी है तो दो एडजस्टेंट एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। डायरेक्टली आप उसको कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। यू आर टेकिंग माय पॉइंट, इट इज प्रूव्ड ऑलरेडी। नोट डाउन करिए इसको। नोट डाउन, और इसके बाद लिखिए कंप्लीटेड। मैं कमेंट बॉक्स को देख रहा हूं। Please write in the comment box, sir, completed and understood also. समझ में आया नहीं आया ये भी लिखिए। नहीं आया तो मैं दोबारा आपको रिपीट करूं। एक लास्ट और रह गया जो डेफिनेशंस में है। देखो, लाइन जोड़ एंगल्स में स्टार्ट करने से पहले इन चीजों का सबका मालूम बहुत जरूरी है। अगर ये सारी चीजें मालूम नहीं होगी तो लाइन जोड़ एंगल्स आगे नहीं बढ़ सकते हम। इसलिए मैं पूरी डेफिनेशन जो है ना, सारी की सारी
पहले आप उसको लिखिए अच्छी तरीके से। Comment box I am seeing. Understood or not? Please write. अब द लास्ट एक डेफिनेशन और बचा और उसके बाद एक थ्योरम कराऊंगा। नहीं सर, नहीं दिख रहा, मैं लाइट बंद करके देख रहा हूँ, कैमरा बोर्ड नहीं दिख रहा। मैंने सबके पास अभी करके भेजा है। ऐसा देखो कहाँ कहाँ जो नीचे अपने बच्चे लिख रहे हैं तो बोर्ड ड्राइव नहीं दिखा। ये बोर्ड तो नजर आ रहा है, ब्लर कर रहा है। लाइट एकदम लाइट जाएगी तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। आप बिल्कुल अब ये उनके कनेक्शन अलग अलग होगा कनेक्शन अलग अलग फैन से अलग और पेपर ले लेना है उनसे। हाँ, और ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा ये जो अपने कमेंट्स आ रहे हैं हाँ पूरा आज वाला चाहते हैं नहीं, मैं तो कमेंट में दे रहा हूँ। आप ही खाली ये पूरा समझ में आया ये Last, vertically opposite angle. Vertically opposite angles. What are the vertically opposite angles? यहाँ पे डेफिनेशन इसकी आप लिख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। When two lines intersect, suppose this is AB and this is CD. This is AB, this is CD. यार एक बार बताओ लोग
please comment. 1 minute, listen student. इसके फादर को बुलाओ स्कूल में, कुछ नहीं करना कल चाहता। भी उनकी क्लास में पूरे बच्चे सारे यूज किया है। Who is this guy? इसी का मैं कह रहा था जब आप किसी नंबर को जोड़ रहे हो वो लड़का यहाँ से जुड़ा हुआ है या नहीं है। कितनी देर हो अभी चल रही इसी क्लास में। ये कौन है? ये कल भी और परसों भी हर क्लास में यूज हुआ है। इसको रिमूव मत करो। इसका ना मेल आईडी निकालना। ये तो उसमें से इंफॉर्मेशन में से निकालो। ये बच्चे बोल रहे हैं नीचे आके देखो माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। कल भी वो बच्चे बोल रहे हैं सर हर क्लास में यूज कर रहा है ये। इसको सर अभी आप क्लास कंटिन्यू करो, उसको टाइप करेंगे चिंता मत करो। हाँ पक्का ये मतलब ये सुनो, ये कमेंट ऐसे नहीं जाएगा, जो प्रोफाइल टाइप कर दिए वो डिलीट नहीं कर सकता। हो गया, इसको अपन टाइप करो। यही मैं इसलिए मैं तेरे को जा रहा हूँ, मैं आवाज नहीं कंटिन्यू करो क्लास में। Yes, vertically up. We are saying that student also mail ID वगैरह हम ले रहे हैं उस बच्चे की और हम ढूंढ लेंगे कौन है that student. Don't worry. But अगर आपको मालूम है तो you give the comment on the comment box also कि वो student है जो कि ये language use कर रहा है, क्योंकि हमने पहले भी comment देख चुके हैं हम उस बच्चे के। तो आप उसका नाम अगर किसी बच्चे को मालूम है तो tell, otherwise हमारे expert जो है ना अभी ढूंढ रहे हैं उसका नाम। अगर आप बता सकते हैं कि वो स्टूडेंट ये है तो आप बहुत अच्छी बात है, यू आर गुड स्टूडेंट। और अगर आप यही कहोगे कि माइंड योर लैंग्वेज तो उसको कोई असर नहीं पड़ने वाला है, हम उसके पेरेंट्स से बात करेंगे, हम कोई एक्शन थोड़ी कर रहे हैं। अरे जब कोई बिगड़ जाता है तो उसको सुधारेंगे ना, उसकी अच्छाई के लिए आप उसका नाम बताइए, उसकी बुराई के लिए नाम नहीं, उसकी अच्छाई के लिए नाम बताइए। यू आर टेकिंग माई पॉइंट ना। Vertically opposite angles. See, when two lines intersect each other, two lines, दोनों straight line है, two lines intersect each other, then they form two pairs of vertically opposite angles. They form two pairs of vertically opposite angles. अब वो कौन कौन सी पेयर है दैट यू हैव टू राइट। ये तो वो पॉइंट है, एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ डी। पहला तो ये वर्टिकल पेयर है और सेकंड वन एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी। ये जो दो पेयर है अपोजिट एंगल्स होते हैं, आमने सामने वाले एंगल होते हैं, these are called vertically opposite angles. क्या लिखना है आपको? When two straight lines intersect, then they form two pairs of vertically opposite angles. और फिर आप एग्जाम्पल देके बता सकते हो ये पेयर vertically opposite angles। और ये लिखने के बाद आपको यहाँ कमेंट बॉक्स में करिए सब कंप्लीटेड। मेरे को बताइए, मैं देखना चाहता हूँ। प्लीज टेल मी यू हैव यू कंप्लीटेड और नॉट। 5-10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, फिर हम फिजिक्स के लिए आएंगे, फिजिक्स के लिए करेंगे। आप मेरे से जुड़े रहिए और जिसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है प्लीज कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए। मैं कमेंट बॉक्स देख रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, प्लीज टेल मी। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए अगर इसमें से मैंने सारी डेफिनेशंस आपको बताई है, लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स,
मैं नेक्स्ट क्लास में थ्योरम्स को स्टार्ट करूंगा और एक्सरसाइज को स्टार्ट करूंगा। ध्यान रहे, ज्योमेट्री को बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़िए, क्योंकि ये समझ में आनी चाहिए, ये आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। यू आर टेकिंग माय पॉइंट? इसलिए ज्योमेट्री को मैं बहुत धीरे धीरे, आज सारी की सारी डेफिनेशंस मैंने बता दी। पहली थ्योरम मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, प्रूव इट। दिस इज द फर्स्ट थ्योरम। आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज इन्फॉर्म मी, मेरे को बताइए। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मेरे को, कमेंट बॉक्स में, कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है। 5-6 मिनट्स का हम ब्रेक ले रहे हैं, मैथमेटिक्स क्लास हुई है 1 घंटे की, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि क्या चीज आपको समझ में नहीं आई जो कि मैं रिपीट कर सकूं। मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर यू अंडरस्टूड, राइट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। इफ यू अंडरस्टूड प्लीज राइट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड सर। वर्टिकली एंगल की फिगर जो है बड़ा सिंपल है, 2 लाइन को इंटरसेक्ट करना है, स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करना है। स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करना है। अभी तक किसी बच्चे ने मेरे को उस बच्चे का नाम नहीं बताया जिसने गलत लैंग्वेज का यूज किया है, और मेरे ख्याल से कुछ बच्चे जरूर जानते होंगे हु इज दैट गाय। प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दैट बॉय और गर्ल, व्हाटएवर। I will take the physics class now. But you people should know, आप कह रहे हैं हमें मालूम नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप आपस में तो बात करते होंगे ना बेटा।
और वो नंबर किसी ने ऐड कराया होगा। ओके बेटा, वी विल स्टार्ट फिजिक्स क्लास ग्रेविटेशन। हम उसका आगे ग्रेविटेशन का पार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन इससे जो पहले क्लास हुई थी, दैट आई टोल्ड यू द ग्रेविटेशनल लॉ, Kepler's laws, I have explained to you people. Now I am explaining what is free fall. ये बोर्ड दिखाई दे रहा है किसी को, या व्हाइट लग रहा है, पूरा दिखाई दे रहा है जो मैं लिख रहा हूं? कैन यू सी द बोर्ड? अरे बोर्ड पे जो चीज लिख रहा हूं वो दिखाई दे रहा है? कमेंट बॉक्स में बताइए, अदरवाइज मैं इसको पानी से साफ कराऊं। बोर्ड दिखाई दे रहा है? मैं गीले कपड़े से साफ कराऊं क्या इसको? अच्छा वेट करो थोड़ा, मैं गीले कपड़े से साफ कराता हूं। One minute, students, please. हम इसको पूरा ऊपर से नहीं, बस यहाँ हमेशा पूरा गीले कपड़े अच्छी तरह, उनको दिखता ही नहीं है, व्हाइट हो जाता है ना, पूरा वहां तक नहीं, बस यहाँ तक का पूरा एकदम साफ कर दिया।
यही मस्जिद का थोड़ा हाँ उल्टा करके वेरी गुड अब मोबाइल हाँ उसको धन्यवाद एक मिनट थोड़ा सा सोच लेते फिर हम देखते हैं अब थोड़ा दिखाई देगा इससे ये तो फिर वाइट ऑटो आ रहा है थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा देखने में अगर मैं इसमें लिख दूंगा तो ऊर्जा तो मिटेगा नहीं देखिए फ्री फोर्स इसकी डेफिनेशन लिखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल राइट अभी थोड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को the falling of a body from a height towards the earth under the gravitational force of earth is called free fall. What I am saying, I am reading again. The falling of a body from a height towards the earth under the gravitational force of the earth is called free fall. कोई भी बॉडी है अगर किसी हाइट से नीचे फ्रीली जाती है कोई भी अगर फोर्सेस इसमें नहीं है तो हम उसको बोलते हैं फ्री फॉल दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी वो किससे हो जाती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और जिस चीज को खींचती है ना बेटा उसके द्वारा जो फोर्स होता है नीचे आती है दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल ऑफ द बॉडी समझ में आया फ्री फॉल ऑफ द बॉडी ये डेफिनेशन सारी आपको लिखनी है जो मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं दैट यू हैव टू राइट
बच्चों लिसन, माय डियर स्टूडेंट्स लिसन, अगर कोई बॉडी सपोज इट इज कमिंग डाउन, क्या है अर्थ पर आ रही है, फ्रीली फॉलिंग है, इसके ऊपर कोई भी वो नहीं है, बॉडी इज कमिंग डाउन, वो किसी फोर्स से, आपके फोर्स से, ध्यान रहे इसकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी, वेलोसिटी डिफरेंट होगी हर प्लेस पे। तो जब इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी, जब ये फ्री फॉल में होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस बॉडी हैव सम एक्सेलरेशन, इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन भी होगा। जब बॉडी मूव करेगी तो एक्सेलरेशन तो होगा, बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो आएगी नहीं। जब बॉडी अर्थ के द्वारा जब उसको खींचते हैं, अर्थ के द्वारा जब ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे आती है, तो देयर इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, एक्सेलरेशन इन द बॉडी। और वो जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो एक्सेलरेशन होता है, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो अर्थ जो है जिस पावर से उसको खींचती है ना, उससे बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और उसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको we will denote it by g, स्मॉल g। वैसे तो a होता है, a भी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ही होता है, बट g क्या होता है, g वो एक्सेलरेशन होता है जो अर्थ के द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा क्रिएट हुआ हो, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्लीज राइट द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Please write the definition of acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Bracket में लिखो small g. देखिए, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड in a freely falling body due to the gravitational force of the is known as एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको थोड़ा समझिए, मैं इसके ऊपर कुछ डेरिवेशन भी करूंगा आपको। वन फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट टू डिराइव फ्रॉम दिस। सी द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स का, मतलब कि वो मैंने आपको बता दिया, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है जब वो नीचे आता है कोई बॉडी, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और उसी फोर्स को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू जी। और इसको स्मॉल जी से नोट करते हैं। एंड इट इज सेम फॉर ऑल द बॉडीज। एक ही होता है, चाहे वो बॉडी कितने भी मास की हो, 50 किलो हो, 50 केजी हो, 100 केजी हो, 1000 केजी हो, एक्सेलरेशन सेम होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होगा। तो इसके अंदर आप ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज राइट दीज टू लाइन्स, प्लीज राइट दीज टू लाइन्स। फर्स्ट, please write, I am speaking, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity
produced in a freely falling body. Acceleration due to gravity produced in a freely falling body is same. Acceleration produced in a freely falling body is same for all the bodies. For all the bodies, acceleration produced in freely falling bodies are same for all the bodies. For all the bodies, and it does not depend upon, listen it carefully, very important line, it does not depend upon the mass of the body, the mass of the falling body. इससे क्या होता है यू नो, चाहे हम किसी भी हाइट से या आप कह सकते हैं, और ये बॉडी है, दिस बॉडी हैविंग 1 kg, अनदर बॉडी हैविंग 10 kg, और हमको इनको दोनों को फ्री फॉल में छोड़ना है। अगर हम इनको फ्री फॉल में छोड़ दे ऊपर से, लिसन इट केयरफुली, तो ये दोनों बॉडी सेम टाइम पर टच करेगी इसको अर्थ, सेम टाइम पर, इनका एक्सेलरेशन सेम होगा, इसका एक्सेलरेशन सेम होगा। मतलब कि जो जी है ना, जी स्मॉल जी, ये कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है। फिर आप कहोगे सर ये तो चलो कम है, हम एक कागज का टुकड़ा, 1 पेपर और एक 10 kg मास, ये मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिख के दिखाइए इसका आंसर, इसका आंसर मेरे को लिख के दिखाइए। I am asking one question to you people. Please write the answer. 1 पेपर, एक पेपर है, कागज है, और एक 10 kg वेट, किसी भी हाइट से अगर हम इसको छोड़ते हैं तो कौन सी चीज पहले आपको टच करेगी? गिव द कमेंट टू मी। पेपर पहले टच करेगा या वेट पहले टच करेगा? प्लीज टेल मी। फर्स्ट पेपर विल टच द अर्थ और वेट विल टच द अर्थ। 10 kg वेट है। प्लीज गिव मी द कमेंट इन कमेंट बॉक्स। गिव द आंसर ऑफ दिस। पेपर पहले अर्थ को टच करेगा या वो वेट पहले अर्थ को टच करेगा? दोनों में बहुत डिफरेंस है वेट में। प्रेजेंट नहीं करना है आपको। मैथमेटिक्स की जो वो है वही मैं फिजिक्स में लगा दूंगा। आप मेरे इस बात का आंसर दीजिए। पेपर पहले टच करेगा या वो वेट पहले टच करेगा? अगर कोई कह रहे हैं कि साथ में करेंगे तो एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लो। अरे दोनों में से पहले कौन सा, वेट या पेपर? एक ने बोला वेट, दूसरा बोला है सर पेपर। अच्छा, और कोई दो आंसर? वेट पहले टच करेगा और पेपर पहले टच करेगा और गिव द आंसर्स टू मी। कमेंट बॉक्स खोल रखा है मैंने, मैं देखूंगा। हाँ वेट बोल दो। 10 kg वेट बिल्डिंग नहीं जाएगा, वेट बोल दो। वेट पहले टच करेगा, साथ में करेंगे, बोथ एट द सेम टाइम। आपने कभी ट्राई किया है? एक्सपेरिमेंट करके देखो क्या सेम टाइम में आएंगे? देखिए स्टूडेंट, अच्छा पहले सुनिए, अब कमेंट कोई देने की जरूरत नहीं है। लिसन मी केयरफुली।
मेरे को सुनिए, अभी कमेंट देने की जरूरत नहीं है। लिसन मी, मैंने अभी आपको बोला था कि जो एक्सेलरेशन होता है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास। अभी कोई कमेंट मत दीजिए, पहले सुनिए। अभी कोई कमेंट मत दीजिए, पहले आप सुनिए। जो एक्सेलरेशन बॉडी है, चाहे वो पेपर हो चाहे वेट हो, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। बट अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो अगर आप एटमॉस्फेयर में करोगे तो वेट पहले टच करेगा। वो क्यों? क्योंकि पेपर थोड़ा चौड़ा होता है, एयर रेजिस्टेंस होती है, उस पर दूसरे फोर्सेज एक्ट हो जाते हैं। हल्का होता है, दूसरे फोर्सेज उसमें एक्ट करने लग जाते हैं। अगर आप एटमॉस्फेयर में एयर के अंदर अगर करोगे तो वेट पहले टच करेगा, और ये तो बहुत सिंपल सी बात है। बट लिसन इट केयरफुली, अगर कहीं पर आप एयर निकाल दो, ऑक्सीजन निकाल दो, एयर निकाल दो उसमें से, और वैक्यूम बना दो, और वहां उसके ऊपर एक पेपर और वेट दोनों को लगाओ, और दोनों को किसी हाइट से डालो, तो दोनों बॉडी सेम टाइम पर अर्थ को टच करेगी। बोथ बॉडी विल टच द अर्थ एट द सेम टाइम। when there is vacuum, एयर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एयर आने से जो पेपर होता है हल्का होता है, उसके अंदर नीचे से फोर्स लग जाता है, एयर रेजिस्टेंस होती है। तो एयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस? विच रजिस्ट द बॉडी, वो बॉडी को रजिस्ट करती है। तो रेजिस्टेंस जो है ना ज्यादा हो जाती है, वो क्योंकि हल्की होती है, मास पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, तो उससे वो फिर नीचे आने में उसको देर में आएगा, वेट पहले आएगा। बट अगर एयर को हटा दो और फिर आप दोनों चीजें 1000 kg और 1 kg को भी डालोगे तो दोनों सेम टाइम पर ही आपको टच करेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। बॉडी का कोई भी मास हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। यू आर टेकिंग माई पॉइंट ना? यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो इससे ये क्लियर हो जाता है। इफ यू डू सम एक्सपेरिमेंट इन वैक्यूम आल्सो, किसी वैक्यूम में अगर आप उसमें से डालोगे तो दोनों चीजें सेम आएगी, सेम टाइम पे आएगी। और इससे क्या प्रूव होता है बेटे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, वो किसी मास पे डिपेंड नहीं करता। राइट सर? मैं अभी एक बहुत अच्छा डेरिवेशन आपके सामने कर रहा हूं। आई एम डूइंग वन डेरिवेशन टू यू, बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्लीज गो डाउन। Having body mass m, a body having mass m, अब वो ड्रॉप किया है आपकी, अर्थ से वो फ्रीली फ्लोटिंग हो रहा है, अर्थ पे आ रही है, उसकी बॉडी का मास m है। लिसन, और ये अर्थ है, अर्थ का जो मास है वो कैपिटल M है। कैपिटल M किसका लेते हैं मास? कैपिटल M किसका मास होता है? अर्थ का मास होता है। और बॉडी का मास है m, जो इधर। अच्छा एक बात बताइए, और अर्थ का जो रेडियस है वो r है, कैपिटल R रेडियस, क्योंकि अर्थ जो है अपने सेंटर की तरफ खींचती है, है ना? सेंटर की तरफ खींचती। ध्यान रहे, हम इस हाइट को नेग्लिजिबल ले लेते हैं। ये जो बॉडी होती है अर्थ के सरफेस के ऊपर जो होती है, इसको नेग्लिजिबल ले लेते हैं। मतलब कि क्या कहेंगे? दिस बॉडी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r। r भी बहुत बड़ा होता है आपका, r डिस्टेंस से बॉडी आ रही है सब। तो दोनों बॉडी के बीच में डिस्टेंस क्या होगी बेटे? r, कैपिटल R, रेडियस होता है, ये रेडियस होता है। तो ये दोनों बॉडी, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था अभी, ग्रेविटेशनल लॉ, two bodies attract each other by some force, and what is that force? अभी दो बॉडी पे फोर्स कैसे लगाओगे? कैन यू राइट द फोर्स? यस, F इक्वल टू, इन दोनों बॉडी के बीच में फोर्स कितना होगा?
By gravitational law, G, ये पहले मैंने G बोला था, G is a gravitational constant, M capital, M1 into M2, और यहाँ M1 क्या है? एक तो मास है बॉडी है और एक आपका मास, अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, और डिस्टेंस में क्या ले रहा हूँ? रेडियस होता है, ऊपर की डिस्टेंस छोटी होती है रेडियस के कंपैरिजन, इसलिए हम उसको R ले लेते हैं। तो ये फोर्स हुआ किस पर? ड्यू टू अर्थ ऑन द बॉडी, ये फोर्स हुआ ड्यू टू अर्थ ऑन द बॉडी, जो अर्थ जो है बॉडी पर जो फोर्स लगा ये वो समझ में आया? अंडरस्टूड? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान दें, by Newton's second law also, by Newton's second law there is a force on the body also, एक फोर्स और होता है जिसको हम निकाल सकते हैं, जो बॉडी के अंदर जो फोर्स होता है, and that force is, you know, that force is m into a, mass into acceleration। ये आप न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से करते हैं, मास into acceleration। ये दोनों फोर्स है, ये सेकंड है, दोनों बॉडी के बीच में लगे हुए हैं, सेम होने चाहिए, फोर्स तो सेम होने चाहिए, वो भी आएगा ये भी आएगा। दिस इंप्लाइज टू व्हाट? M A is equal to G and capital N upon R square, M upon R square, you know M cancel, what is that? A is equal to G M upon R square। See, here I can say A जो होता है that is acceleration, क्योंकि बॉडी फ्री फॉल में आ रही है तो इस acceleration को मैं क्या लिख सकता हूँ? G भी लिख सकता हूँ, small g, and this implies what? G is equal to Gn upon R। You see, this is a very good derivation, very good derivation। Please note down this derivation। ये derivation है G is equal to Gm upon R square, where G, capital G is a gravitational constant, capital M mass of the earth, capital R radius of the earth। इस डेरिवेशन को लिखिए और फिर मेरे को बताइए कि यस सर वी अंडरस्टूड। प्लीज राइट दिस डेरिवेशन, वेरी सिंपल डेरिवेशन। कोई भी बॉडी ऊपर एम से आ रही है नीचे, G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हाँ, वही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है। ये स्मॉल आर ना लिखिए, कैपिटल आर लिखिए। दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ मैंने क्या लिया? डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। स्मॉल g इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर। ये डेरिवेशन मैंने पूरा किया है। स्मॉल g इज इक्वल टू, ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G आल्सो। कई बार ऐसे भी होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G? स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो भी आप इसको आप डेरिवेशन को कर सकते हो। दिस डेरिवेशन इज वेरी यूजफुल। प्लीज राइट दिस होल डेरिवेशन एंड टेल आई अंडरस्टैंड और नॉट। ये मेरे को कमेंट सबके आने चाहिए। या आप क्या चीज नहीं समझे हैं वो कमेंट देख के मैं अभी बता दूंगा। प्लीज गिव मी द कमेंट्स। नरेश राणा, आई कांट अंडरस्टैंड दिस। व्हाट यू डिडंट अंडरस्टैंड? टेल मी, कौन सी टर्म आपको समझ में नहीं आई? मैंने दोनों फोर्स निकाले, एक फोर्स को ग्रेविटेशनल लॉ के हिसाब से निकाला है, दूसरा न्यूटन सेकंड लॉ को, इन दोनों को कंपेयर किया है। बस उसी से ये रिलेशन बना है। हाँ, यस, ग्रेविटी जो है सब ऑब्जेक्ट पे सेम होती है। मैंने कहा ना, ऑब्जेक्ट किसी भी मास का हो उस पे ग्रेविटी सेम होगी। Please tell completed sir, understood sir. This is a very great relation between small g and capital G. G is equal to gm upon r square. Every student, please tell me you understood or not.
This is the derivation, this is the relation between G, small g and capital G also. And you know student, you can find out what is the value of small g, 9.8 meter per second square. ये acceleration होता है. Please give the comments of all the students. Yes, understood, sir. Capital G is gravitational constant. कल बताया था ना परसों. कमेंट में कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कमेंट में आप लिख दीजिए. एंड स्टूडेंट, जो आपकी वर्कशीट ई कंटेंट्स में आ रही है, उन वर्कशीट को आपको करके स्कूल में डाल के जाना है. सर, हाउ डिड ए बिकेम जी in second equation? Better, there is no difference between A and G. Both are same. Both are acceleration. एक acceleration दो bodies के बीच में होता है और एक G होता है. G कब होगा? एक G कब होगा? जब वो फ्री फॉल में होगा या अर्थ के द्वारा कोई ग्रेविटेशन लगा होगा, ग्रेविटी फोर्स लगा होगा, तो वो G में हम नोट कर सकते हैं. इप्सिता दास, your question I read it. वो आप जो इक्वेशन जो मोशन के अंदर बता रही है, उसमें हम जी की भी यूज कर सकते हैं. v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. Ipsita Das, please give the comment if you understood. If you are not understanding, please give me some words, sir. This I don't know the meaning. You know physics को कभी रट्टा उससे नहीं पढ़ना है. फिजिक्स को थोड़ा समझ के पढ़ना है. मैथमेटिक्स होता है वो फिजिक्स. Please give the comment if all of you understood. I also tell about G. G के बारे में मैं और भी बताऊंगा. इसी रिलेशन को हम यूज करेंगे. इसे G क्या होता है, दैट आई विल टेल टू यू. सिली सी है, अभी बता देता हूं. लिसन, स्टूडेंट लिसन हियर. G इक्वल टू Gm अपॉन R square. Listen it carefully what I am saying. इस फार्मूले से क्या मतलब हुआ? Listen it. Acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity is inversely proportional to the square of radius. इसका मीनिंग ये हुआ, ये जो डिस्टेंस है G, एक और मैं बता देता हूं. सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर हर जगह पर G सेम नहीं होता. इस बीच का डिफरेंस आप नोट करिए. G जो है उस प्लेस पर हर एक बॉडी में तो सेम होगा, पर G आपका कहां पर लग रहा है? अर्थ पे पोल्स पर लग रहा है या इक्वेटर पर लग रहा है, वहां पर G की वैल्यू सेम नहीं होगी. G विल चेंज प्लेस टू प्लेस. मून पे G बहुत कम होगा, तो ये ध्यान में रखें. G कैसे चेंज होता है? G इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस. देखिए स्टूडेंट, लिसन. सपोज वी आर दिस अर्थ. आपका रेडियस जो भी होता है वो तो रेडियस होता है. ओके, सेंटर में आया आपका सेंटर. जब इस बॉडी, ये कोई बॉडी है अर्थ सरफेस पे, ये जितनी ऊपर जाएगी, वी गो अप. इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है इस बॉडी की या सेंटर ऑफ द अर्थ पे, ये रेडियस से भी ज्यादा होगी. आर बढ़ेगा ना,
तो जितनी ऊपर ये बॉडी जाएगी आर विल इंक्रीज, और ये जब आर इंक्रीज होगा, आर इंक्रीज होगा, नीचे जब चीज इंक्रीज होगी तो जी क्या होगा, बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, और स्क्वायर है फिर इसका मतलब अगर आर जो है ये बढ़ेगा तो जी बढ़ेगा, और अगर आर कम होगा, रेडियस कम होगा, अब मानो ना अर्थ जो है इलेक्ट्रिकल होती है, एकदम पूरी गोल नहीं होती, पोल्स पे रेडियस सबसे कम होता है, पोल्स पे रेडियस कम होता है, इसलिए जी मैक्सिमम है पोल्स। यू राइट दिस क्वेश्चन, जी इज, why g is maximum at pole? Because value of radius is minimum there, सबसे कम होती है वहां आर की, और इक्वेटर होते हैं जो बीच में, वहां आर मैक्सिमम होता है, सबसे बड़ा होता है, वहां पर जी की वैल्यू जो होती है सबसे कम होती है। जितना आर बड़ा होगा जी कम होगा, जितना आर छोटा होगा उतना जी बड़ा। तो जी प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, डिपेंड अपॉन आर। पर फिर आप ये बोलोगे कि सर अगर ये बॉडी अंदर जाएगी तो अर्थ के अंदर चली जाए तो आर कम हो जाएगा, अर्थ के अंदर जाएगी और क्या, और सेंटर ऑफ द अर्थ में क्या होता है, मैक्सिमम ग्रेविटी होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। ये फार्मूला इनसाइड ऑफ द अर्थ नहीं है, अगर अर्थ के अंदर जाएंगे वहां ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं। लिसन, if we are going up or we are going down, the value of G will increase। चाहे आप जाओ चाहे डाउन जाओ आपके अंदर, वैल्यू ऑफ G will increase। ये आपने मन में रख लेना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ध्यान रहे, अगर कोई डिफरेंस पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ये जी जो है चेंजेबल है, और ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ये सेम होता है, दिस इज सेम एवरीवेयर, बट स्मॉल जी विल चेंज प्लेस टू प्लेस। मैंने बोला ना हर जगह पे चेंज होता है भाई, हमारा आप चीज नोटिस किया, स्फेरिकल होती है वो, और वो इलेक्ट्रिकल होती है। कल मैंने बताया था ना कैपिटल इलेक्ट्रिकल इन शेप। यू आर टेकिंग माय पॉइंट। इसलिए जो जी की वैल्यू होती है, जी विल चेंज प्लेस टू प्लेस, इक्वेटर पर कुछ होती है, पोल्स पर कुछ होती है, तो ये प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। एंड दिस वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, जी इज इक्वल टू जी ऑफ मास। एक क्लास ग्रेविटेशनल की और लूंगा मैं, जिसमें मैं थ्रस्ट एंड प्रेशर्स को आपको कंप्लीट कराऊंगा, ऑप्शनल क्वेश्चन और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी मैं आपसे पिकअप करूंगा। ओके, तो आप ये लिखिए सब चीजें, और ये जी के जी इक्वल टू जी अपॉन आर स्क्वायर। और यू नो देखो जी 9.8 का टाइम आ रहा, आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो, जी इनटू आर स्क्वायर अपॉन एम। इसमें सारी वैल्यू कांस्टेंट होते हैं, रेडियस ऑफ द अर्थ भी आपको मालूम, एम भी मालूम, मास होता है, और जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अंडरस्टूड? यू कैन फाइंड इट। आप ग्रेविटेशनल को ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा, आप यू कैन राइट आल्सो इक्वेशंस ऑफ मोशन इन ग्रेविटी फॉर्म। ग्रेविटी अगर कोई बॉडी कर रही तो b इक्वल टू u प्लस gt, s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gs। एक ही जगह क्या यूज हो जाएगा, gu। I will tell you in the next class। अभी तो 5 to 6 मिनट्स मालूम और बचा है, अगर टॉपिक को मैं स्टार्ट कराऊं तो खत्म नहीं होगा।
In the next class, I will tell you what is the difference between mass and weight and what is pressure, thrust. ये चीजों का डिस्कशन में आपसे करूँ इन द नेक्स्ट। ओके सर, थैंक यू। ये सारी नोट्स आप बनाते जाइए फिजिक्स के, जितने भी नोट्स बनाने, और किसी को भी चीज अगर समझ में नहीं आया पर्सनल भी आप मेरे को व्हाट्सएप करें। थैंक यू। पर इनको तो हटाना पड़ेगा ना, बच्चों को तो एडजस्ट करने पड़ेगा। हाँ, इसको बोल देना लिंक से हट जाओ, अपने वाले दिन में अपना आप जाते, मैंने पेपर उठाया। क्लासेस जाके। हाँ, बेटा नाउ वी विल बी डीलिंग विद क्लास 10th। क्लास 10th इस लिंक पे आएगी, तो आप प्लीज इस लिंक से हट जाएं। क्लास 9 के बच्चे प्लीज इस लिंक से हट जाइए। अब क्लास 10th के बच्चे पढ़ेंगे बेटा इस लिंक पे। क्लास 9 के बच्चे प्लीज हट जाएं। नाउ दिस लिंक विल बी टेकन ओवर बाय क्लास 10th। तो ये जा नहीं रहा है और आपको व्हाट्सएप है चालू है क्या? तो आप इसीलिए तो 9 से जुड़ी हुई ना? आप किससे जुड़ी हुई, किस क्लास से जुड़ी हुई? 8 में भेजू बोले तुम आपको गया तो वो किस मार्क नहीं आया। अब मेरे नंबर पे पूछना किसी का भी लगा हुआ है, तो आएगा ही तो जाएगा। मेरे इसी दिशा से यही चला है। वो 25 कनेक्ट होगी ना सर, ऑल पिक कर गए 8 बज रहे होंगे। मैं बोलता हूँ हाँ
गया बेसिकली में डाल दिया मैंने। हाँ हाँ जी हाँ जी थैंक यू। Good afternoon, kids. Now we'll be dealing in this class chemistry chapter. And I would expect you to keep your notebooks and your books open. Class 10 kids, open up your book for acid, bases and salts. हाँ जी we have covered the heading up to 2.1 in my last lecture. Today we'll be dealing with topic 2.2 onwards. 2.2. 2.2 onwards will begin. And the important things what do acids and bases have in common? That is the first one. Then what happens to them in water? What happens on dilution? This is the next one. And after that is how strong are acids and for this we are supposed to understand what pH scale. And then comes the important most. Of course, everything is important. I'm telling you as per board pattern, there are certain questions that are important up to this heading also. But basically, we are supposed to focus on in our book. On page number 29, there is a table. Page number 29, under the heading pH of salts. That activity we will be checking. That 2.4,
sodium chloride, then potassium nitrate, aluminum chloride, zinc sulfate, copper sulfate, sodium acetate, sodium acetate, sodium carbonate, and sodium bicarbonate also should be there. So we'll basically begin with the first heading here. Try and understand what do acids and bases have in common. If you can hear me clearly, well and good. If there is a problem, you can write down. Acids will have, if you just see the formula of any acid, that acid will be definitely having hydrogen ion in it, H plus ion. So what all do all acids have in common? They have hydrogen ion common in them, H plus. Be it this HCl, H2SO4, HNO3, कोई सा भी एसिड हो, उसमें क्या कॉमन है? H plus आयन कॉमन है. और बेसिस में क्या कॉमन है? बेसिस में कॉमन है OH नेगेटिव आयन, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन. किसी भी फॉर्मूले को अगर अपन देखें, KOH, NaOH, in all of those cases hydroxides are there, and in hydroxide that OH negative ion is common. Once again, what is common in both of them? In case of acids, H plus ion, and in case of bases, OH negative ion. Next heading is what happens on dilution. Here comes an important question, board pattern. Definitely, the moment you start diluting an acid or a base, all three topics are connected with each other. Remember, we call some acids as strong acids, and they are known as tezab in Hindi. Hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid, all of them are strong acids. Why are they strong acids? Because they dissociate completely, पूरी तरीके से टूट रहे हैं और बहुत सारे H plus ions दे रहे हैं. Therefore, they are strong acids. Bases भी strong और weak दोनों होते हैं. Strong bases के एग्जाम्पल होते हैं बेटा NaOH, that is sodium hydroxide, and potassium hydroxide. ये strong क्यों है? फिर से वही कारण है, because these bases dissociate completely to their OH negative ion. ऐसे bases जो पूरी तरीके से नहीं dissociate हो रहे हैं, वो हो गए हमारे weak bases. Weak acid और weak bases वही हैं जो पूरे तरीके से dissociate नहीं होते हैं. Important 2 mark question board based. क्या पूछा जाता है? उसमें पूछते हैं how will you dilute a strong acid which is concentrated. हमें लैब में यूज करना है H2SO को डाइल्यूट फॉर्म में. आप उसको डाइल्यूट कैसे करेंगे? तो डाइल्यूट करने का तरीका बेटा प्लीज ध्यान रखना. दिस इज अ 2 मार्क बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. हम कभी भी एसिड को, प्लीज इसको ऐसे आप लीजिए क्योंकि बच्चे उल्टा लिख के आते हैं एग्जाम में. कीप इन माइंड दैट ऑलवेज दीज एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड दे आर हॉट. दैट वे यू रिमेंबर. याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, एसिड जो स्ट्रॉन्ग है अपन याद कैसे रखेंगे. एक आपके हाथ में बहुत गर्म चीज पकड़ी हुई है और अगर उसके अंदर आप पानी डाल देंगे, उबलते हुए तेल में अगर पानी डालेंगे तो स्प्लैश होगा ना फेस पे. वही प्रॉब्लम होती है इफ यू आर होल्डिंग अ कंसंट्रेटेड एसिड इन योर हैंड और कंसंट्रेटेड एसिड के ऊपर अगर आप पानी डाल देंगे तो होगा क्या? इट विल स्प्लैश ऑन द फेस ऑफ द पर्सन हु इज ट्राइंग टू डाइल्यूट इट. इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? इससे बचने के लिए हम करते हैं व्हाट वी डू इज वी टेक वाटर. हम लेते हैं पानी, पानी के अंदर हम डालते हैं एसिड ड्रॉप वाइज. I repeat, we put
We take water and in that water we add drop-wise acid with constant stirring. हिलाते हुए उस टेस्ट ट्यूब को धीमे धीमे उसके अंदर एक एक करके बूंद करके एसिड को डाला जाता है। याद रख लीजिए पानी ठंडा है, एसिड जो है वो धीमे धीमे डालेंगे तो नुकसान नहीं करेगा। This is very important question. 1 or 2 mark question in board exam. They ask how to dilute an acid. Now the important one after that. How will you find out that bases or acids are how much are they strong? कुछ हमने याद करके रखा है pH scale में. Acids turn blue to red. pH scale is mentioned on page number 25, figure 2.6. Figure 2.6 if you see. याद रखने का तरीका ये है बेटा, pH scale 14 के ऊपर डाला जाता है। 14 तक वैल्यू हमें ध्यान रखनी है। 7 वैल्यू जो सेंटर में है वो न्यूट्रल इंडिकेट करता है। I will be talking to you about the question based on this also. How do they ask in exam? First of all, try and understand that exactly in the center of it, at the value 7 lies neutral, पानी। 7 से नीचे जब चलते चले जाएंगे वो सारा क्या है? एसिड। 7 के ऊपर सारे बेसिस हैं। 7 के नीचे H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। That means if you are taking the value of 6, 5, 4, 3, 2 and 1, all of them are acids. If you are going ahead, then they are on bases up to 8 to 14. अब बच्चों यहाँ कंफ्यूजन कहाँ होता है? एग्जाम में आपको pH वैल्यू देके पूछते हैं which is more acidic and more basic. कंफ्यूजन बेस में नहीं होता, बेस पे सीधा पूछते हैं कि out of the value of 8 and 14 is the value of NaOH. Out of these, which one is more basic? तो हमारे लिए क्लियर लिखना आसान होता है that NaOH is more basic. जिसकी वैल्यू 14 है वो सबसे ज्यादा बेसिक है, आसान है, क्योंकि 8 से 14 ज्यादा है। कंफ्यूजन कहाँ होता है? wherein they ask that there are two acids, value 4 and value 1. Which one out of these two is more acid? तो बच्चे 4 को लिख के आ जाते हैं, जो कि गलत है। जिसकी वैल्यू 1 है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। The pH value 1 will be highly acidic in nature. pH value 1. Concentrated acids होते हैं ये HCl. They will be having a high concentration of H+ ions. Either way, if I say, अगर आप 7 से नीचे को जाते चले जा रहे हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो उसके अकॉर्डिंग H+ आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। The acid with pH value 4 will have less H+ ion concentration on dissociation. टूटने के बाद कम H+ आयन देगा, बजाय उसके कि वो एसिड जिसकी वैल्यू है 1 टूटने के बाद वो ज्यादा H+ आयन देगा। ये ध्यान रखना है बेटा। It goes, the number goes in decreasing order, but the concentration of H+ ion increases. Stepwise it increases. Remember that always. And on pH scale, there are different colors mentioned over there. Please do learn them. Now coming down to one more important, a very important activity. In that activity, they have just given the names of certain salts. Whenever we are talking about these salts, हम begin करते हैं सोडियम क्लोराइड से। आपको एग्जाम में इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपको सॉल्ट का नाम दे देंगे बेटा और आपसे पूछेंगे यू टेल अस अबाउट द पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस ऑफ द सॉल्ट, और या फिर आपसे पूछेंगे टेल अस द नेचर ऑफ द सॉल्ट। इसका नेचर बताइए। नेचर का मतलब क्या हो बच्चे? हमें सीधे बताना है वेदर द सॉल्ट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। आउट ऑफ द थ्री वी आर सपोज्ड टू टेल। अभी हम कैसे पता लगाएंगे? हम वहां पे किसी भी सॉल्ट के नाम पे तुक्का नहीं लगा सकते कि ये पर्टिकुलर सॉल्ट जो है ये एसिडिक होगा, ये बेसिक होगा, ये न्यूट्रल होगा। नो, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर लेआउट। उसके लिए प्लीज रिमेंबर वन थिंग, हमारे पास रिपीटेडली आपको बोल रहे बेटा 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, HCl, H2SO4 एंड HNO3।
बेटा किसी भी सॉल्ट के सरनेम में अगर Cl NO3 गैसोफोर लगा है तो मतलब उस सॉल्ट का पेरेंट एसिड HCl HNO3 गैसोफोर है। रिमेंबर दिस। अभी अगर सॉल्व करेंगे बोर्ड पे तो आपको और समझ आएगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए। वीक एसिड में एसिडिक एसिड आता है CH3COOH, ये वीक है। स्ट्रॉन्ग बेसिस पे है KOH NaOH, okay, they are strong acids. Sodium hydroxide, potassium hydroxide, they are strong. Sorry, they are strong bases. Weak bases are ammonium hydroxide. They are weak. Now, acid plus base gives salt plus water. We know very well. Neutralization reaction. हम नाम से ही स्प्लिट कर सकते हैं कि उसका पेरेंट एसिड कौन सा है और उसका पेरेंट बेस कौन सा है। बहुत आसान है। सामने मैंने कुछ एक फॉर्मूले लिखे हैं। आई होप ये आप नाम कोरिलेट कर सकते हैं और टेक्स्ट बॉक्स में दे रखा है, अपने पास है, बोर्ड पे जाएगा। मैं सो आई हैव रिटन द फॉर्मूला डायरेक्टली। फॉर्मूला ध्यान से देखिए। पहले वाले का फॉर्मूला लिख देते हैं, सोडियम क्लोराइड, दैट इज मच मोर इजियर। सोडियम क्लोराइड इज NaCl। अब हमें इसका बताना है पेरेंट एसिड कौन सा है, पेरेंट बेस कौन सा है, और ये जो है दे आर बेसिकली एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। सो विल मेक सम कॉलम्स। दिस आई एम टेलिंग यू इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी नंबर 2.14 के डिटेल्स हैं। बट बिफोर मूविंग इनटू दिस, पीएच जो हमने कवर करा बेटा, पीएच में जिसमें कि आपके पास 14 तक वैल्यूज हमने कवर करी थी, सेंटर में 7 है, 7 से कम एसिडिक है, 7 के ऊपर बेसिक है। अब पीएच अगर आप देखें अपनी डे टू डे लाइफ में कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, आप देखिए तो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, इसमें जब एसिडिटी बढ़ती है तो हमें कुछ ना कुछ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोतल से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, डाइजीन की जो होती है गोलियां या उसका सिरप वो दिया जाता है, वो आप लें तो आपका एसिडिटी नलिफाइड होता है। ये हमारे सिस्टम की बात है। सॉइल में भी आपको पता है कि पीएच की वैल्यू बहुत होती है। आपको पता है कि देयर आर सर्टेन फर्टिलाइजर्स व्हिच आर एसिडिक इन नेचर, देयर आर सर्टेन फर्टिलाइजर्स व्हिच आर बेसिक इन नेचर। तो एसिडिक जो नेचर है वो उसके अंदर अगर आपको डालनी है फर्टिलाइजर, आपकी सॉइल से फॉर एग्जांपल डेफिशिएंट है पोटेशियम में और सॉइल का नेचर है एसिडिक, तो हम पोटेशियम का ही फर्टिलाइजर डालेंगे लेकिन बेसिक नेचर का डालेंगे। क्लियर? रिमेंबर दिस। एंड ऑफ कोर्स स्टेप बाय स्टेप वी फेस दिस एसिडिटी एंड बेसिसिटी इन आवर डे टू डे लाइफ। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, टूथ डीके, टूथ डीके में क्या होता है, खाना हमने खाया, खाना हमारे दांतों में अटक गया, that खाना which is still attached in teeth is eaten up by the bacteria। हम कितने भी अच्छे से अपने टीथ को ब्रश कर लें, उसके अंदर कहीं ना कहीं फूड पार्टिकल्स अटके रह जाते हैं, तो इसीलिए टाइम एंड अगेन हमें रिंस करना चाहिए अपने माउथ। Now those food particles they are eaten up by bacteria। बैक्टीरिया उसको खाया चलेगा, लेकिन जब बैक्टीरिया खाता है तो उस प्रोसेस को क्या करता है बेटा, एसिड बाहर की तरफ रिलीज करता है। तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है, हमारे दांत के पास खाना अटका हुआ है और वो बैक्टीरिया उसको खा रहा है और खाते खाते एसिड को रिलीज कर रहा है। एसिड रिलीज करते करते क्या हो गया, उसके अंदर दांत के पास में एसिड कलेक्ट होना शुरू हो गया एंड दैट एक्चुअली स्लोली डिटोरिएट्स, धीमे धीमे करके वो, जस्ट इमेजिन हमारे दांत के ऊपर जो इनामल होता है उसको कहते हैं हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, वो उसको खत्म कर देता है, धीरे धीरे उसका छेद कर देता है। टूथ डीके में भी एसिडिटी का होता है। एक और छोटा सा एग्जांपल डे टू डे लाइफ में पीएच का। हमें पता है कि कभी ना कभी कीड़ा काट जाता है, या स्पेसिफिकली अगर कहीं ना कहीं आपको लाइफ में वास या बी स्किन का हुआ हो, गॉड फॉरबिड कभी होना नहीं चाहिए, जिनको हुआ उनसे पूछ सकते हैं। जब होता है ना तो उस केस में क्या होता है कि उसके अंदर सीवियर पेन होता है उस जगह, बिकॉज दीज इंसेक्ट्स दे लीव मीथेनोइक एसिड, वहां पर रिलीज करते हैं छोटा सा अमाउंट एसिड का।
The moment they release that methanoic acid in there, that causes severe pain. Now, one way is that you can put that hand or that part of the body under water. अगर वो नहीं है तो घर में अगर आप हैं तो वहां पर अगर आपके पास बेकिंग सोडा से रब कर दीजिए तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कुछ वैसे ही हुआ तो हमारे पेट में एसिडिटी हुई थी, हमने एंटासिड पी लिया, एसिडिटी खत्म हो गई। It's that neutralization reaction, and this acidic value is very important. Just now, what I took up was, ये आपका topic कहाँ दे रखा है? This topic is given on page number 26 and 27. That is the importance of pH in day-to-day life. Now there is one table they had given on page number 28. This table here, they ask certain questions from this table also. In this table, if you see that they had mentioned vinegar contains acetic acid, जो हमें याद रहता है, लेकिन हमें जो याद नहीं रहता, of course curd contains lactic acid, lemon का lactic acid हमें याद है, पर हमें रखना किसका है? हमें रखना है इसका टैमरिन का टार्टरिक एसिड। टैमरिन का टार्टरिक एसिड याद करना है बेटा, टोमेटो का ऑक्सैलिक एसिड, टोमेटो का ऑक्सैलिक एसिड, एंड स्टिंग हो चाहे लेटर स्टिंग, ये पत्ती होती है इसके कांटे होते हैं, एंड स्टिंग हो चाहे लेटर स्टिंग हो, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? मीथेनॉइक एसिड। तीन चीजें याद करी हमने, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, टैमरिन में टार्टरिक एसिड, और लेटर स्टिंग हो चाहे किसी चीनी का काटना हो उसके अंदर क्या है? मीथेनॉइक एसिड। Now what I am going to solve here is given this activity number 2.4. इसमें काफी सारे compounds के नाम दे रखे हैं. Those compounds I had put in the form of formula here, and now we are going to work on this. We are going to find out its parent acid, its parent base, and of course the nature of the salt. बहुत important है कि बोर्ड के point of view से ध्यान रखिएगा. Now we are going to mention here parent acid. यहाँ पर parent base. It will be better if you write it side by side. Nature of salt. The first one is NaCl. पहला वाला जो है ना वो जनरली बेस को इंडिकेट करता है. जो हमारे कंपाउंड का नाम है उसका पहला एलिमेंट इंडिकेट करता है बेस को. और NaCl, Na मतलब किससे बना? NaOH से. Cl कहाँ से आया? HCl से. तो जो NaCl हमें मिला वो क्या हो गया? न्यूट्रल सॉल्ट हुआ. क्यों न्यूट्रल हुआ? क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो डेफिनेटली सॉल्ट कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल. मैं फिर से दोहरा रहा हूं बेटा. इफ द पेरेंट एसिड इज स्ट्रॉन्ग, कौन से एसिड हमने कवर किए थे? HCl, H2SO4, HNO3. अगर पेरेंट एसिड इनमें से कोई एक है और बेस NaOH और KOH में से कोई एक है तो सॉल्ट न्यूट्रल होगा. Acid strong, base strong, salt neutral. Acid strong, base weak. Base weak हो गया तो salt कैसा हो जाएगा? Acid. Acid weak, अगर acid weak है लेकिन base strong है salt में, जिस salt इस base से बना हुआ base strong है तो salt का नेचर कैसा हो जाएगा? Basic. Let us solve that. Please इसको नोट कर लीजिएगा. Is going to be needed by you in future. I am telling you. So NaCl का parent acid हो गया HCl. Base हो गया इसका, ये NaCl यहाँ से कटा, तो यहाँ हो गया इसका parent base NaOH. दोनों strong है, NaOH और HCl. तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा? सॉल्ट का नेचर यहाँ से कटा. पोटेशियम, पोटेशियम है तो बेस कौन सा हो गया?
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम का बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NO3 कहां से आया HNO3 से। बेटा फिर से स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए तो क्या हो गया अगेन न्यूट्रल। AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम गोes for एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसका बेस और ये हो गया HCl अगेन स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल। ZnSO4 जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH और SO4 कहां से आया H2SO4 से, दोनों स्ट्रॉन्ग फिर से न्यूट्रल। CuSO4 यह आ गया हमारे पास H2SO4 इसका एसिड आ गया सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर हाइड्रोक्साइड वीक बेस ये हो गया एसिड, they are both neutral। CH3CONA इसमें आया NaOH, NaOH तो बेस हो गया और CH3 COOH एसिड हो गया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो हो गया इसका नेचर बेसिक। प्लीज नोट इट डाउन इन 2 मिनट्स ऑफ टाइम, 2 मिनट का टाइम दे रही हूं, नोट कर लीजिए प्लीज। दिस इज बेस्ड ऑन योर 2.14। This is based on activity number 2.14। नोट करिए इसको प्लीज, 2 मिनट का टाइम है बेटा, 2 minutes time exactly। By the time आप लिख रहे हैं मैं फिर से इसको दोहरा देती हूँ। If the acid is strong and base is also strong, both are strong, then in that case what happens that the salt will be neutral। अगर acid strong है base weak है तो सॉल्ट एसिडिक हो जाएगा, अगर एसिड वीक है बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट बेसिक हो जाएगा। You noted it down? Let's recall before moving ahead। आगे बढ़ने के पहले इसको जरा वापस रिकॉल करते हैं, हमने यहाँ तक क्या कवर किया फिर इसके आगे कवर करेंगे। हमने सबसे पहले आज कवर किया एसिड्स और बेसिस में क्या क्या कॉमन है, के बाद नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे, इसको जल्दी से नोट कर लेंगे, उसके आगे हम बढ़ेंगे। फिर हम नेक्स्ट चीज आई एम पुटिंग ऑन द बोर्ड। एसिड में H+ आयन कॉमन है, बेसिस में OH नेगेटिव आयन कॉमन है। देन नेक्स्ट वी हैव कवर्ड व्हाट हैपेंस ऑन डाइल्यूशन। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था हमारे पास कि आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड को डाइल्यूट कैसे करेंगे। तो इसका तरीका क्या है हमारे पास में एसिड को डाइल्यूट करने का, कि आप एसिड लेंगे और उसको ड्रॉप वाइज पानी में डालेंगे, ड्रॉप वाइज कॉन्स्टेंटली हिलाते हुए ताकि हीट जनरेट ना हो। दोनों बातें जैसी लगती हैं, एसिड में पानी डालना, पानी में एसिड डालना, नो, बट एक्चुअली यू आर सपोज्ड टू डाइल्यूट एन एसिड बाय टेकिंग वाटर, add acid to it drop wise and then stir it, ताकि उसमें हीट जनरेट नहीं हो, वो स्प्लैश ना हो फेस पे। नेक्स्ट हमने क्या कवर किया था, हमने कवर किया था हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स एंड बेस ऑन पीएच स्केल। पीएच स्केल में हमने क्या कवर किया कि अगर पीएच स्केल 14 का है, 7 पे न्यूट्रल है, 7 के ऊपर सारे के सारे बेसिक है, 7 के नीचे सारे के सारे एसिडिक हैं। एसिडिक में क्वेश्चन जो सबसे कंफ्यूजिंग बनता है आपसे पूछेंगे, a particular acid has a value of 4 and a particular acid has a value of 1. Out of these two, दोनों में से which one has more hydrogen ion concentration? हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन किसके पास ज्यादा है?
तो डेफिनेटली जैसे जैसे हम नीचे की तरफ चलते चले जाएंगे वहाँ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा। Then we had covered about acidity, pH value in our day-to-day life. pH सॉइल का मेंटेन करना चाहिए। हमारे बॉडी में अगर स्टमक में एसिड बढ़ेगा तो हमें वेस्ट लेना होता है। And if we are going ahead towards another lactic acid तो क्या वो बेसिक है? That is curd is also basic in nature. फिर हमने क्या कवर किया? हमने ये कवर किया उसके बाद में कि अगर हमें कोई इंसेक्ट बाइट करता है या नेटल स्टिंग हमने पढ़ा नेटल लीफ, अगर ये दो चीजें हमें कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाती हैं, दे रिलीज मीथेनॉइक एसिड। उस मीथेनॉइक एसिड से बचने के लिए हमें क्या करना है? उस मीथेनॉइक एसिड से बचने के लिए हम उसके ऊपर या तो सोडियम बाइकार्बोनेट घर में मीठा सोडा रखकर उसे रगड़ देंगे, नहीं तो पानी के यूज से धोएंगे तभी एसिड का इफेक्ट खत्म होगा। All those we had covered, and then we had moved down to pH of salt. Salt की तरफ जब हम आए तो हमने salt के नाम कुछ लिखे based on activity number 2.14. उन salts के parent acid, parent base और nature of salt. बेटा अगर आपने लिख लिया है तो प्लीज टाइप कर दीजिए, मैं इसको रब करके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी। If you have noted it down, write it in your chat box that you have completed so that I can. Okay. And now we will be dealing with the next heading, that is, the next heading we have is chemicals from salts. And in this diagram is very important, very important. The diagram that is given Bacha on this page, this is very important. Okay, removing these cylinders from the middle, I will be writing all these uses of it. हमें इसी के uses को अच्छे से समझना है. This will be the last heading of the day. आज जो हमें समझना है वो यही है, इसी चीज को मैं बोर्ड पे डालने वाली हूँ। That is, हमें बेसिकली अब क्या टॉपिक कवर करना है इसके अंदर? We are supposed to deal with chemicals from common salt. हम common salt से कौन से chemicals निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले what we are going to do is that आप भी मेरे साथ, अगर आपके पास घर में बुक खोल रखी है आपने बेटा, तो डायग्राम फिगर 2.8 में सिर्फ ये सिलेंडर नहीं बनाई है, सिलेंडर की जगह पे सिर्फ H2O और NaOH लिखिए और उसके नीचे जो यूजर्स लिखे उन्हें भी लिखिए। आप कोई भी कॉल अभी ये याद हो जाएगा। लाइक आई टोल्ड यू मॉर्निंग, सबके पास बुक्स हैं, सबके पास साइड बुक्स हैं, लेकिन क्लास में याद कर लो। So let's try to learn it. So here we begin first of all, that is the chemicals from NaCl we are studying. And here we have this equation. This is actually known as chlor-alkali process. And that is when NaCl in aqueous state plus H2O, this gives us NaOH in liquid form, aqueous, and these two in gaseous form. All of it I am not noting down. You are supposed to note down the complete balance equation from your notebook. मैं आपको इसको explain करेंगे क्या चीज़ है. And then after that, this when NaCl breaks up, like I write in your book, it is shown this way, NaCl, and there it goes. उसको भी समझेंगे कि एनोड और कैथोड ये चीजें क्यों आ रही हैं. It says at cathode we have H2
And at anode. At anode we have Cl chlorine. And in the liquid we have this NaOH. Then joining these two, further we form HCl, and joining this we make BH. In short, I have drawn this with diagram. So if we just try and understand this one right from beginning. The first one. This is chloralkali process. Why do we call it as chloralkali process? Chlorine is released. Alkali, that is NaOH. Here we let's understand the meaning of the term alkali. What is alkali? Alkali are the bases which dissolve in water. They have the capacity or caliber to dissolve in water. Then we call them as alkali. How do we actually perform this? We take, remember one term, brine, B-R-I-N-E. It's a concentrated solution, a saturated solution of NaCl. सोडियम क्लोराइड लिया, नमक लिया, उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार किया. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? A solution in which you cannot dissolve solute. A solution in which you cannot dissolve solute more than a particular limit at a particular temperature. अभी हमने ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन अपनी डे-टू-डे लाइफ में कहाँ देखा है? जहाँ पर आपने कवर किया था किसको? चाशनी. घरों में कई बार सामान बनाने की चाशनी बनाई जाती है. पहले ठंडे पानी में चीनी घोलते हैं, फिर गर्म करते हैं. गर्म करने पे और चीनी घोली जा सकती है. प्लीज ध्यान दीजिए, ठंडे टेम्परेचर पर वो सैचुरेट हो चुका था, हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, उसका सैचुरेशन लेवल बढ़ गया, ठीक है, डिसॉल्व हो गया. रिमेंबर दिस. तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया, दैट इज NaCl का सॉल्यूशन लिया और उसको इलेक्ट्रोलाइज किया. आपको इलेक्ट्रोलाइसिस ध्यान है. इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब यह हुआ कि हमने ब्राइन लिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl लेकर के उसके अंदर एनोड और कैथोड डाल दिया. इलेक्ट्रिसिटी पास करी. The moment you start passing electricity, उसमें ये टूटने शुरू हो जाते हैं. NaCl starts breaking up. अब टूट के किस तरफ जाता है? क्या क्या देगा वो उसमें से? डेफिनेटली वो क्योंकि aqueous solution है, उसके अंदर हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व होगा. NaCl टूटेगा तो Na में स्प्लिट होगा, Na प्लस और Cl माइनस में स्प्लिट होगा. तो इन दिस केस व्हाट हैपेंस? जो Cl माइनस है, Cl माइनस एक और Cl के साथ मिल होकर के क्लोरीन गैस बना है. Cl which breaks down from NaCl, तो NaCl से टूट रहा है क्लोरीन, वो क्लोरीन गैस के फॉर्म में बाहर आता है. Na जो है वो पानी में से, पानी जो टूट गया ना, H प्लस और OH नेगेटिव है. H प्लस और OH नेगेटिव में जो टूट गया, उसमें से उसने क्या करा, OH के साथ में जुड़कर उसने क्या बना लिया? NaOH, अल्कली. और लास्ट में हमारे पास क्या बचा? हाइड्रोजन. अब बेटा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है? तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने नहीं देंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं इसमें से? दे में आस्क यू व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज chlor-alkali process and write its balanced complete equation. chlor-alkali process इसलिए इसको बुलाते हैं क्योंकि इसके एंड प्रोडक्ट्स में हमें मिल रहा है क्लोरीन और अल्कली. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. क्लोरीन गैस मिल रहा है और अल्कली दैट इज NaOH का एटम. Therefore this process is known as chlor-alkali process. In this particular one, ऐसा क्यों हुआ कि एनोड पे हमें मिल रहा है Cl2 और कैथोड पे मिल रहा है H2? इसका भी रीजन है. Cl is Cl माइनस. बेटा नेगेटिवली चार्ज आयन है तो इट विल बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स. अगर नेगेटिवली चार्ज आयन है तो किसकी तरफ डाइवर्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ. दैट मींस इट विल गो एंड डिपॉजिट एट द एनोड. और पॉजिटिवली चार्ज अगर है तो किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव. नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर कौन सा है? कैथोड. So therefore, hydrogen being positive, it gets connected at cathode, and this chlorine being negative, it gets connected at anode. बाकी जो remaining है aqueous में वो
हमें मिल जाता है अल्कली, दैट इज NaOH। Joining these two, of course, hydrogen और chlorine के अपने-अपने uses हैं। Then after that, we will be reading those uses also. But combining these two together, hydrogen और chlorine हम यहाँ से मिला, वहीं पर कहानी से बंद नहीं करते हैं। हम इन दोनों को जोड़ते हैं और इसमें से बनाते हैं HCl, जिसके further uses। And we definitely join taking these two, we form the bleach also, and the bleach has also got uses in our day-to-day life. Let's try and understand their uses now. Before moving ahead, once again, एक बार और मैं आपसे रिकॉल करना चाहूँगी। हमने इस टॉपिक में भी क्या कवर किया? हमने कवर किया कौन से केमिकल्स हमें सॉल्ट से मिल सकते हैं। एंड वी आर बिगिनिंग आवर स्टोरी। तो स्टोरी की बिगिनिंग में हमने क्या देखा कि हमें मिला, सबसे पहले हमने उसको क्या लिया था? ब्राइन, अ कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट लिया, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स को डिप किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया। कैथोड पे हमें मिला हाइड्रोजन, एनोड में मिला क्लोरीन और सॉल्यूशन में मिला NaOH। Once you obtain these three, you call this process as chlor-alkali process because you are getting chlorine and alkali out of this particular process. Then after that, after this chlor-alkali process, we are obtaining certain products. These again they are joined and they have varied uses. Now I want you people to understand these uses one by one. Please keep the particular chapter open, the particular diagram open. Hydrogen will be used as fuel, margarine and ammonia for fertilizer. Political use of hydrogen क्यों नहीं हो रहा? अभी तो हम कवर कर रहे थे कहीं पर कि भैया हाइड्रोजन को क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का कंबशन जो है वो कंट्रोल नहीं है। हम अपने व्हीकल में या अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में तो नहीं यूज कर सकते बेटा। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इज यूज्ड इन रॉकेट्स, जिन्हें अपन PSLV भी बुलाते हैं या लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, जिनके वो अपने को सैटेलाइट्स ऊपर भेजने होते हैं। द मोमेंट द इग्निशन काउंटडाउन कम्स डाउन टू 0, एक इग्निशन दिया जाता है और उसमें हमारे पास, आपने अगर टेलीविजन पे देखा हो कभी, तो ये रॉकेट जो जिन्हें हम एक्चुअली रॉकेट को कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली PSLV, द लॉन्च व्हीकल सिस्टम। जैसे अर्थ से ऊपर की तरफ उठता है तो आपने देखा होगा पहले उसका एक जो रिंग निकलता है, एक छल्ला निकलता है, क्रॉस हो जाता है, फिर एक और नीचे गिरता है, ऐसे। तो उनमें बेटा लंग्स में दोनों, क्योंकि ऊपर उठने पे ऑक्सीजन भी नहीं है, लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन दोनों रहते हैं। जैसे स्पार्क हुआ, दिस हाइड्रोजन गैस बर्न्स एंड इन अ सिंगल स्टेप इट रिलीजेस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। And the simple fact that for every action there is equal and opposite reaction. जैसे ही वो प्रेस करता है जमीन को, पूरी गैस निकलती है एक साथ उसके बर्न होने के बाद, जमीन में जैसे पुश करता है उतने ही प्रेशर के साथ में the rocket is lifted up. There hydrogen is अमोनिया as a fertilizer. अमोनिया क्या है? NH3 अगर फॉर्मूला देखें तो उसका तो डेफिनेटली इसमें H कहाँ से आ रहा है? That is coming from this particular process से जो हमें हाइड्रोजन मिल रहा है, इससे हम अमोनिया बनाते हैं। Now let us see the next use. The next use are of chlorine, water treatment, swimming pools, PVC, disinfectant, CFCs and pesticides. PVC और CFC आपको पता है? PVC क्या हो गया? पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC पाइप्स होते हैं बेटा, अगर आपने कॉमन डे टू डे लाइफ में देखा हो, उनको बनाने के लिए काम आता है वहाँ पे। और क्लोरीन का तो कॉमन यूज है, आपने सीधे बच्चे स्विमिंग पूल जाते होंगे, तो स्विमिंग पूल का ऑफ कोर्स वहाँ पर उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए काफी लोग आ रहे हैं। क्लोरीन हम डायरेक्टली क्लोरीन टैबलेट की फॉर्म में भी यूज करते हैं बेटा, पानी में से माइक्रोब्स को मारने के लिए, और हम क्लोरीन को यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की तरह। ब्लीचिंग पाउडर जैसे हमने डाला, आपने देखा होगा थोड़ा देखा उसमें से स्मेल आनी बंद हो जाती है, क्योंकि क्लोरीन गैस उसमें से निकल गई है। दैट हेल्प्स इन किलिंग द इंसेक्ट्स। अभी अपने बारिश के मौसम में बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी, और आप देखिएगा बारिश के मौसम में अपने नल के पानी में भी काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है क्लोरीन, बिकॉज दे पुट मोर ऑफ क्लोरीन। पानी गंदा भी आ रहा होता है और उसके अंदर स्मेल भी होती है। दे हैव टू किल द माइक्रोब्स, उनका टारगेट वो होता है कि घरों तक साफ पानी पहुंचे, देयरफॉर द स्मेल इज मोर। यहाँ पर एक चीज और एडिशन यहाँ ऐड करना चाहूंगी। क्यों ऐसा होता है कि हमें बोला जाता है जब आप स्विमिंग पूल में उतरे तो आप पहले नहा के जाएं, निकलने के बाद वापस उठ एक बार, जाने के पहले इसलिए देना होता है क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर हमें नॉर्मल करना होता है पानी के हिसाब से। लेकिन आने के बाद दे आस्क अस टू अवॉइड स्विमिंग पूल में जाना पीक सन के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे मना किया जाता है। पीक टाइम पे मना करते हैं बेटा, क्यों?
क्लोरीन जो एक्सेस है उस पानी में, अगर वो आपके स्किन पे रह गया एंड दैट इज एक्सपोज टू सन, अगर वो सन को एक्सपोज हुआ तो उस वक्त दैट कॉजेस टैनिंग, स्किन को ब्लैकनिंग कर देता है। क्लोरीन का ये साइड इफेक्ट भी है। Now coming down to NaOH. NaOH basically is an alkali. Alkali, what exactly is an alkali? Alkali is a base dissolved in water, and it is used in degreasing metals, making soaps and detergents, paper and artificial fibers. Degreasing metals और NaOH, ये alkali हम वहाँ भी यूज करते हैं जहाँ पे साबुन बना देते हैं। सोप मेकिंग के प्रोसेस में NaOH plays again an important role. and detergent as well. थोड़ा सा भी अगर नाले अगर भी डेफिनेशन करेंगे ना बेटा, तो आपको पढ़ेंगे सोप्स और डिटर्जेंट्स की डेफिनेशन है। सोप्स आर द लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम का प्रोटेक्शन है, तो यहीं से आता है। एंड देन आफ्टर दैट joining hydrogen and chlorine both of them together to form hydrochloric acid. It is used to treat steel. Form ammonium chloride. What is the formula of ammonium chloride? NH4Cl. अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे? क्लोरीन का। डेफिनेटली बोथ ऑफ देम आर नीडेड फॉर दैट। अमोनियम क्लोराइड इज in turn used as base chemical for many chemicals again. Talking about now together for bleach. Household bleaches for fabric, they are made by chlorine and NaOH. One term they had given in the middle, that is CFC. Chlorofluorocarbons. We have heard a lot about them. हमने उसके बारे में क्या सुन के रखा है? हमने ये सुन के रखा है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है ये, और ये बहुत ज़्यादा ओजोन को डिप्लीट करती है। But is it actually that bad? अगर इतना बुरा था, उसका प्रोडक्शन बंद क्यों नहीं कर देते? Why don't we reduce it? Why don't we actually completely banish it from our हटाई दीजिए CFCs? They are that dangerous. लेकिन but CFCs के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। CFCs का बेटा बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रियॉन गैस। फ्रियॉन गैस हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, उनके कंप्रेसर में जो बिल होता है उसमें यूज होता है, एंड दैट गैस एक्चुअली कीप्स ऑन मूविंग ऑल अराउंड द बॉडी ऑफ द रेफ्रिजरेटर, कीपिंग इट कूल। उसको ठंडा रहेगा हम लोग। सो इफ that CFC in that form, a single form, refrigeration is an utmost important all over the world. पूरी दुनिया में सामान को सही रखने के लिए refrigeration is must. और refrigeration के लिए हमें क्या चाहिए? हमें refrigeration के लिए चाहिए फ्रियॉन गैस. That is again a fluorocarbon. यूज होते के टाइम भी है। Why these CFCs are so dangerous? क्योंकि बेटा मॉलिक्यूल्स इतने लाइट होते हैं, इतने हल्के होते हैं कि सीधे इससे जैसे रिलीज हो ना नीचे किसी भी मशीन से, they start rising up slow and steady and they reach finally to deplete the ozone layer. We are supposed to cover the topic only up to here today. Let us recall what we have covered today again for the last time revision. पीछे से आगे को जाते हैं। हमने सबसे पहले अभी लास्ट में क्या कवर किया? हमने कवर किया NaCl से निकलने वाले कंपोनेंट्स। NaCl की हमने वर्ड याद किया था ब्राइन। हमने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया था, उसको इलेक्ट्रोलाइज किया, उसमें से हमें H2 मिला, Cl2 मिला, NaOH मिला। Therefore this process is known as chlor-alkali process. Then we had seen the uses of all of them. Before that, उसके पहले हमने क्या कवर किया था? हमने कवर किए थे वो सॉल्ट्स। अगर हमें ध्यान दें बेटा, उस एक्टिविटी के बेस पे आप लोगों को क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड में। तो आपको एक पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि आप बताइए ये सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। और दे मे इवन आस्क टू राइट डाउन इट्स पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस। प्लीज प्रैक्टिस दोस, प्लीज प्रैक्टिस अ फ्यू मोर, कीप डूइंग दैट। उसमें एक स्टैंडर्ड रूल ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से? HCl, H2SO4, HNO3। स्ट्रॉन्ग बेस स्पेसिफिकली कौन से पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में? KOH, NaOH, दे आर स्ट्रॉन्ग। वीक बेस कौन सा हुआ? वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वीक एसिड कौन सा हुआ? वैसे तो बहुत है जो अपन खाते हैं, सारे माइल्ड एसिड हैं, साइट्रिक एसिड हो गए, सारे ये जितने अपन बड़े टार्ट्रिक एसिड हैं, इनके क्या फॉर्मूले बहुत बड़े होते हैं। तो आप लोगों के लेवल पर दे आर गोइंग टू आस्क टू मैक्सिमम दिस एसिडिक एसिड CH3COH।
ये जो है ये वीक हो गए। अगर पेरेंट एसिड स्ट्रॉन्ग है, पेरेंट बेस स्ट्रॉन्ग है, दोनों के दोनों जुड़ करके बनाएंगे न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो सॉल्ट हो जाएगा एसिड। अगर एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट हो जाएगा बेसिक। ध्यान रखना इस बात का। ओके, और नाम हमने रख लिया स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इससे हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जाम में कभी। देन आफ्टर दैट, उसके पहले हमने कवर किया था पीएच, और पीएच हमारी डे टू डे लाइफ वाले में से 1 मार्क क्वेश्चन दे में आस्क यू अबाउट एसिडिटी इन द स्टमक एंड दे में आस्क यू अबाउट दिस एंड स्टिंग। ये कौन सा एसिड होता है एंड हाउ इट कैन बी क्योर्ड। इथेनॉइक एसिड, रुबिक कार्बोनेट, और maybe phosphoric carbonate. We had covered some pH. pH value 14, central one 7, lower than 7 acidic, higher than 7 basic. Values अगर हमें दे रखी तो that out of 8 and 14 which is more basic and why? 14 is more basic because it has more concentration of OH negative or hydroxide ions. Why out of value of 1 and 4, which one has more H plus ion concentration? 1, the value 1 will have more H plus ion concentration. It dissociates completely. It's a strong acid. Based on this, they may ask you questions, and very important one is how to dilute an acid. A strong acid should be added drop-wise in water with constant stirring to avoid any accidents. Otherwise, it will splash back on the face of the person who is handling it. Then we had covered for these acids that are present in day-to-day life. इसमें हमने 3 नाम याद किए थे नए, बाकी हमें पता है कि खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड है, मिल्क में हमें पता है लैक्टिक एसिड है। हमने याद किया था टोमेटो, we have learned for tomato will have oxalic acid, tamarind will have tartaric acid, and nettle sting or this one any insect bite, they contain methanoic acid. And once it is done, if the insect bite is there, it can be sorted out by using a base or simply washing it thoroughly with water. आप थोड़ा pH scale के कलर्स को याद कर लीजिएगा. Okay, it goes from red to blue. The end of this one base 14 value will be blue, and it will begin with red. Minimum value 1 will be red, and almost like greenish color comes in the middle, that is at value 7 or water. So remember these values also. I am going to post answers, NCERT based answers in the group. You are supposed to write down those in your fair notebook. After I post, please do that. And you are supposed to continuously keep on attempting the worksheets. We are trying to find out an easy way for you people to send it to the school, so that you need not come personally. We are trying to find out, and let's see how frequently we be able to do that. This chapter up to here is what we have today. Please try to learn, read it carefully. और जो बेटा मैंने आपको जो डायग्राम से प्रैक्टिस कराई है, एक तो आपको फॉर्मूले की और एक इसकी ये जरूर करना है, ये भी करना उसमें चाहिए. A simple fundamental is कि आपकी केमिस्ट्री जब स्टार्ट होती है तो उस चैप्टर में जितने इक्वेशंस हैं उन्हें एक बार जरूर लिखिए अपनी नोटबुक में. I repeat, all the equations right from beginning till the end of the chapter, these they should be there in your notebooks. One way or the other they can be asked. This is one task in chemistry. When you're talking about bio, please draw the diagrams that are mentioned in the chapter. They can ask any diagram. Be it chemistry and bio, there are certain rules to attempt the paper. That also slowly we will disclosing in the paper. But my request to you is that please make sure that you are writing all the equations, and not only write them in a balanced way, and learn them, how the products are made. And if at all there are any problems,
hopefully we'll meet soon with one month or two. You can keep posting your doubts also, and I am going to clear them. Once we meet in person, that will be even better. But here during the lecture also, if there is something you don't understand, you can post so that I can explain again. Happy learning kids, all the best. This is your science teacher Vedika signing off for the day.